chance of nicking that. That's why there is that second slip in place as well. Here is Ishfaq Bresnan. This time once more outside the off stump. Once more. He was trying to slash it hard. Plays and misses. Second dot delivery on the trot. Mid-off, mid-on inside the circle. And Parvez Rasool is always passing those directions to the bowler. And the bowler is living up to the expectations. This has been brilliant so far from Ishfaq Bresnan. Asghar went for a few in his first, but Ishfaq Bresnan has bowled brilliantly. Next delivery has him onto the back foot, playing it defensively back along the track. Ishfaq Bresnan fails. Another over comes to an end. This has been brilliant bowling from Ishfaq Bresnan. 3 overs done. It's 20 for the loss of 2 wickets. बहुत बहुत शुक्रिया। क्या स्थिति इस समय मुकाबले की जरूर अब तक पहुंचाएंगे टीम का जो 20 रन टीम का स्कोर कुल मिलाकर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर और अब तक 2 बड़ी विकेट्स गंवाई यहाँ से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने। जिस विकेट की दरकार रही थी, जिस स्ट्रोक की दरकार रही थी, वो खिला उस खिलाड़ी ने, जिसके कारण उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। अब तक कुछ बेहतर स्ट्रोक्स तो ज़रूर आए थे उनके बल्ले से, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रेशर में नज़र आ रहे हैं यहाँ से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम। कमी तो नहीं है बल्लेबाजों की, गहराई है काफ़ी बल्लेबाजी में। और यहाँ जो स्थिति है, इस स्थिति से निकलने के लिए इस साझेदारी को आगे जाना होगा और एक अच्छी बल्लेबाजी करने की। मोहम्मद उमर और इम्तियाज़ लेफ्टी इसमें बीच मैदान पर। इस बार उमर ने गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग की और जब तक वह खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो धकेला वापस। 1 रन दूसरे रन के लिए भी पलट गए आसानी के साथ और 2 रनों की बढ़ोतरी यहाँ से टीम के स्कोर में देखने को मिले। यहाँ से ज़रूर चाहेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी और उमर एक तगड़ी बल्लेबाजी करे, लंबी बल्लेबाजी करे, विकेट हाथ में रखे। जितनी विकेट हाथ में रखेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्या सोच दर्शाई थी वहाँ परवेज रसूल ने। उन्होंने टॉस जीता, पहले फील्ड करने का फैसला किया, तब जाकर उन्होंने दावत दी बल्लेबाजी के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। और इस समय लड़ रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। फिलहाल इस ओवर में अगली मरतबा ओवर द स्टंप्स, इस बार सीधे बल्ले से खेला गया। स्ट्रोक रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद हाथ में ना आने के कारण आसानी के साथ ये 1 रन भी चुरा लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 23 रन टीम का स्कोर पहुंच गया है 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय गेंदबाज असगर गेंदबाजी के मोर्चे पर गति है इस गेंदबाज के पास, जो उन्होंने एक बड़ी विकेट अब तक अपने नाम की है। असगर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने कोटे का वो दूसरा ओवर करे, 15 रन उन्होंने खर्च किए थे। उस ओवर में कुछ महंगे तो जरूर साबित हुए थे असगर, लेकिन वापसी की विकेट लेके फिलहाल इस ओवर में अगली मरतबा तेज रन आपके साथ आए। इस बार गेंद को खेला सीधे बल्ले से, क्लास बड़ा स्ट्रोक था ये। गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। उस और खिलाड़ी थे महज दर्शक बन करे गए, कहते हैं ना गन से गोली निकली, उस तरह का ये स्ट्रोक बल्ले से निकला। खूबसूरत बल्लेबाजी इस समय बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी की ओर से। इम्तियाज लेफ्टी ने 6 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाकर वो नाबाद है। और अब तक यहाँ से इस विकेट को संभालते हुए इम्तियाज लेफ्टी नजर आए, लेकिन अब उन्होंने बल्ले का जो रुख वो खोल दिया। इस बार नीचे रहती हुई गेंद अच्छे साबित रहे कि गेंद स्टंप्स की सीध में ना आई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। कुछ बातचीत करने के लिए तो जरूर गए हैं मोहम्मद उमर, वह इम्तियाज लेफ्टी के पास यही कह रहे होंगे इस तरह के स्ट्रोक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए एक संभलने की ज़रूरत है, एक अच्छी पारी की आवश्यकता है यहाँ से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। फिलहाल इम्तियाज लेफ्टी फिर से असगर का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑफसाइड की ओर नजर दोहराए, दीवार जैसी फील्ड। इस बार पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद नोचली और कहते हैं ना वो लहरते लहरते विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ असगर की ओर से और इम्तियाज लेफ्टी 8 गेंदों का सामना कर चुके, 5 रन बनाकर नाबाद। उमर ने अब तक 3 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर नाबाद। अब तक की ये जोड़ी इस समय बीच मैदान पर 27 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 3.5 ओवरों की समाप्ति के साथ असगर चले इस ओवर में अंतिम और आखिरी मर्तबा तेज कदमों के साथ फिर से इम्तियाज लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेला, गेंद स्लॉट में थी और
पार्क किया पार्किंग लॉट में, गेंद गई है मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा से पार 6 रनों के लिए। शानदार और खूबसूरत छक्का वहां इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। इस बार पूरी तरह से बल्ले का मुंह खोला वहां इम्तियाज लेफ्टी ने और गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए पहुंचाया। इस छक्के के साथ और 6 रनों की बढ़ोतरी से टीम के स्कोर में जरूर यहां से अब खेलने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि बातचीत कर रहे थे आपस में मोहम्मद और उमर और इम्तियाज लेफ्टी, और कुछ बातचीत करने के लिए वसीम काशरू मैदान के अंदर चले गए। वहां से जरूर कुछ संदेश लेके आए हैं इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। आपस में वहां परवेज रसूल ने दायरा बनाया, कुछ बातचीत हो रही है आकिब मीर के साथ, किस गेंदबाज को अब जाकर तलब किया जाएगा 5वां ओवर करने के लिए। कुल मिलाकर पारी के 4 ओवर समाप्त। आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने किस तरह से बातचीत चल रही है, और कप्तान परवेज रसूल ये फैसला कर चुके कि किस गेंदबाज के हाथों में गेंद थमाई जाएगी, किस पर विश्वास जताया जाएगा। और 33 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 4 ओवरों की समाप्ति के साथ विकेट गिरने के कारण कुछ हद तक अंकुश जरूर लगा था रन गति में, लेकिन अब यहां से दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाते रहे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की, उनके पास एक तगड़ी टीम है, एक से बढ़कर एक नाम। शिवा सिंह भी आज टीम लाइनअप में आपको नजर आएंगे। ये है प्लेइंग 11 सुल्तान ये टीम प्लेइंग 11 बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब का इशफाक भट्ट, आकिब मीर और अहमद उमर और अहमद बांडे वो नजर आएंगे आपको, अंकित नजर आएंगे, दानिश खांडे और मयक राथर आएंगे, परवेज रसूल, साकिब नज़ीर, शिवा सिंह और ताहा वो भी तोल्हा भी नजर आएंगे आपको प्लेइंग 11 में असगर के साथ। और बारामूला का जो प्लेइंग 11 में वो भी जरूर आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। फिलहाल पारी के 5वें ओवर की यहाँ से शुरुआत। 33 for the loss of 2. The current run rate is 8.25 and some brilliant shots in the previous over from Imtiaz lefty. One pickup shot over deep mid wicket. That was the shot of the day so far. Mohammad Umar is batting on 4. It's going to be Shiva Singh. It's going to be some left arm spin from the market end. Shiva Singh, he was outstanding in the previous season of BPL, the second season. He took wickets, he scored runs. He was all over the opponents in the previous season. He's got a mid-off inside the circle. He's got a catching extra cover inside the circle. And he's got a mid-on, straightish mid-on inside the circle as well. Long on the boundary. A straightish mid-on and a long on as Shiva Singh. First ball from Shiva Singh. That's deflected away to the left of the fielder at straightish mid-on. It will be a single to Mohammad Umar. He opens his account with that, beg your pardon, he opens that account in this over of Shiva Singh, and the total has gone up to 34 for 2. We are in over number 5. Current run rate is 8.16. Sultan Warriors Baramulla batting first against Bijbehara Sports Club in match number 4 of Bijbehara Premier League edition 3. If anyone is wondering out there that why did Parvez Rasool decide to field first, that's the obvious reason. 34 for 2 inside the 5th over. Now the mid-on fielder has been removed as Imtiaz lefty comes down the wicket. Slowing the pace on that occasion is Shiva Singh. And let me tell you, and let me just share an interesting stat about this guy Shiva Singh. He can bowl 360. He can bowl left arm, he can bowl right arm, and he can turn 360, and he can just be a very, very threatening customer. That's quicker. That's down the leg side. That is easy, and that's 5 wides, I think. Has it kissed the bat? Yes, it has. Given runs. It was down the leg side, and these were easy pickings to the likes of Imtiaz lefty, who has been in some red-hot form, showcasing his red-hot form in this match as well. Couple of brilliant pickup shots, one straight down the ground, and this time getting that inside feather that just sped away to the boundary at fine leg for 4. 38 for 2. We are in over number 5. Crowd in numbers. Imtiaz is batting on 11 with the help of that boundary. Now 15. Umar is batting on 5 of 4. Here is Shiva Singh.
He was trying to go across the line. Shout for LBW. Umpire is unmoved and Shiva Singh cannot believe himself. Probably he just blinded the umpire. I would definitely want to have a look at this. Shiva Singh bowling around the stumps, bowling over the stumps on that occasion. Heaven hitting on the pad. And probably it was going on with the angle. Look at that. He's going on with the angle. Probably it straightened after pitching. And that's the obvious reason why Shiva Singh was appealing. And I think the lefty, the left-handed batter, he got away with that. Yudhvir. If Scott Talha bowled Asghar 13, Wasim Kachru caught Asghar bowled Ishfaq Butt for a duck. Here is Shiva Singh to Umar. Umar goes straight with a straight bat. He just drills it down towards deep mid-on. The batsman settles across for a single. Imtiaz lefty is out there in the middle. Muhammad Umar, the batters to follow. Pradeep Parasar, Jahangir Lone, Owais Baba, Nadeem Dar, Zuhur Zolo, Azim Rathar and Harshid. 9 lakh people addicted to drugs in J&K. 90% of them, as per doctors, are heroin addicts. Heroin, one of the most deadly drugs in the world. Well, it needs 1.2 grams of heroin per day if one is addicted to it. And 1 gram costs 3,000 rupees. Increase in crime, theft and robbery, domestic violence. Society at large and parents, teachers, family members, they have a job to do. Keep your children, keep your wards and keep your students away. Say no to drugs. This is the message from Bijbehara Premier League. State Sports Live is doing an outstanding job. Bijbehara Sports Club, Saqib Nazir, Mike Rawat, Ahmed Umar Bande, Shiva Singh, Aqib Mir, Talha, Ashraf Ishfaq, Bart Danish Khande, Asghar Parvez Rasool and Ankat. A strong looking side from Bijbehara Sports Club. It's going to be a double bowling change. And here comes the iconic mega star. Here comes Parvez Rasool. It's some right arm off spin. He's got a square leg at a catching position. He's got a short fine leg inside the circle. Mid-off has been asked to come and go in at the position of straightish mid-on. The only international and IPL boy from Kashmir is bowling at the moment. And the first one is not far away from that off stump. Interesting battle out there in the middle as Parvez Rasool is going to bowl the second delivery of his quota. Mid-off inside the circle. Mid-on at a straightish position inside the circle. Here is Parvez Rasool up to the stumps. Balls to Umar. Umar goes up. Umar goes over. That's a beautiful off drive for 4. That might have given some sort of confidence to the young man as he's facing against a quality right arm off spinner. An off spinner who has given nightmares to the batsmen throughout the world. Here is Parvez Rasool. This time comes forward, opens the bat face. That's smart batting from Ahmed Umar. He moves to the other end with the help of that single and brings on the left arm, the left-handed batter on strike. Crowd are on their feet. They're watching their mega star. They're watching their lovely, beloved Parvez Rasool in action. So far, he has bowled 3 deliveries. He's given away 5 runs. Field changes for the left-handed batsman. There is a catching extra cover in place. There is a mid-off in place. There is a short square leg in place. Interesting battle. Parvez Rasool. That's well bowled. And that's equally well played. Imtiaz lefty. Right arm off spin, bowling round the stumps, taking the ball away. He's got a slip in place. He's got a backward point in place. And he has got a wide gully in place as well. Here is Parvez Rasool to Imtiaz. Imtiaz angles this one away. Finds the gully. Fielder, there cannot be any runs. It's a dot ball from Parvez Rasool. 5 balls bowled, 5 runs given. Is there a wicket coming? Ahmed Umar has got some advice for his partner. Imtiaz lefty. He would definitely like to go over the infield. Field is inside the ring.
Parvez Rasool is tossing the ball from hand to hand. He's up to the stumps. To Imtiaz. Imtiaz rocks back onto the back foot, and that's an outstanding shot. Picks it up early and smashes it past backward up square leg boundary for 4. Ends the over on a very high. Well, if you are batting against Parvez Rasool, and if you are batting like this, if you're having some authority behind the shot, this is some talent. That boundary has taken the partnership to 31 of 24. Mohammad Umar is batting on 6 of 5. It's 49 for 2 from the power play. Imtiaz lefty batting on 20 of 16. And Mohammad Umar is batting on 11 of 8. Parvez Rasool, 1 over, no wickets, is given away 9 runs. Shiva Singh to continue from the market end. And on strike is Ahmed Umar. He's batting on 11. 4 bowlers used so far. Ishfaq Bresnan and Asghar are the wicket takers. Shiva Singh and Parvez Rasool haven't taken a wicket so far. Shiva Singh to bowl. Now the field has spread out. There is a long off on the boundary. There is a man out on the deep mid-wicket boundary. There is a man out on the long on boundary. There is a man out on deep fine leg boundary. First ball, he belts it straight down the ground. There is protection in the deep now. It will be just a single. He's rotating the strike. He's doing well. And the script has been given to him from the dressing room. And boy, you just have to play sheath anchor's role. You have to just play around the partners who are there to handle the business. Shiva Singh is going to bowl over the stumps to the left-handed Imtiaz lefty. First ball up in the air. There is protection. Aqib Mir, cool as a cucumber, holds on to that. Brain fade from Imtiaz lefty comes to an end. What was he thinking? There was a fielder at deep backward square leg. First ball angled onto the pads. He goes for his favorite slog sweep. He perishes. Have a look at that. Angled onto the pads. Aqib Mir in the deep does not make any mistake. He never misses those. That was skied. Wicket comes under the belt of Shiva Singh. And Imtiaz lefty, he was playing so well. He has to walk back. It's 50 for 3 under some pump, under some pressure. Sultan Warriors Baramulla. और ये तीसरी विकेट का पतन उठता हुआ यहाँ से सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए इम्तियाज लेफ्टी को वापस जाना पड़ा और अब तक इम्तियाज लेफ्टी ने कुछ अच्छी खासी बल्लेबाजी तो ज़रूर की थी, लेकिन इस बार गेंदबाज शिवा सिंह के जाल में फंस गए और चलता बना किया। आखिर मीर ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच लपक लिया और चलता बना किया हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी को। अब किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए? नदीम डार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नदीम डार वो रहेंगे स्ट्राइकिंग वाइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइकिंग वाइकिंग एंड पर मोहम्मद उमर लगातार उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। टीम का कुल मिलाकर स्कोर पहुंच गए 50 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 6.2 ओवर के बाद 20-20 ओवर का ये खेल रहने वाला इस बड़े मुकाबले का आप मनोरंजन इस समय कर रहे हो बीपीएल के ऑफिशियल पेज पे और उसके साथ साथ स्ट्रीट स्पोर्ट्स लाइव के माध्यम से भी, और इस बेहतर कवरेज के साथ आप शेयर करते जाइएगा तब जाकर अन्य लोग अन्य व्यूअर इस मैच का हिस्सा बनते जाएंगे। फिलहाल गेंदबाज तैयार हो रहे हैं शिवा सिंह गेंदबाजी करने के लिए और उनका सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद नदीम डार पहली गेंद का सामना करने की तैयारी में और गेंदबाज इस बार गेंद को खेला, गेंद हवा में चली गई। उस और खिलाड़ी नजर आ रहे हैं डीप पॉइंट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और मात्र 1 रन मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 51 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। The man of crisis, Nadeem Dar, has replaced Imtiaz Butt. Here is Shiva Singh to Umar. Umar drops his wrists, plays it away towards short square leg. Wicketkeeper does the rest. The batsman crosses over for one more.
50 is already up. It's 52 for 3 in the 7th over. Nadeem Dar is 1 of 1. Mohammad Umar is 13 of 10. He has been cool so far. He has been sensible so far. And he has played with some sort of responsibility. Here is Shiva Singh. This time driven handsomely, but finds Parvez Rasool inside the circle at mid-off. Cannot be any runs because he's an outstanding fielder too. An all-rounder for ages. And this part of the world is lucky to have Parvez Rasool in their kitty. He's doing an outstanding job. And if you're watching this quality, it's all because of this man in action. That is outstanding. That's brilliant from Parvez Rasool. If there would have been any other fielder, these would have been 2 runs down towards deep extra cover. No run at all. And Parvez Rasool is still standing on his feet. That's quality stuff from Parvez Rasool. And to my viewers out there in the middle who are watching this live coverage, have a look at it again. If you're wanting to become a good all-rounder, you must have the skills like this. Look at Parvez Rasool throwing his body at stake, and this is outstanding work. This is some international stuff going on out there in the middle, and this is all because of Parvez Rasool. If you're watching this beautiful ground, if you're watching this beautiful strip, and if you're watching this brilliant quality work from my man RJ Bashir, who's doing an outstanding job here, that is brilliant. And we are thankful to the fiber connection given by Airtel Extreme. They are doing an outstanding job. Meanwhile, a reverse sweep earns him 4 there as the fielder fumbles. Parvez Rasool, he cannot be happy on that. Nadeem Dar. Have a look at this. It's Mohammad Umar just switching his hands and just taking it away and beautifully playing it, and the fielder lets it go. Lets it go through the legs. That's 4. Here is Parvez Rasool to Umar. Umar is batting sensibly. Umar is batting with some sort of authority against Parvez Rasool. He knocks it down towards long on, picks up an easy single and moves to the other end. This is smart batting. 18 from 12. 57 for 3 in the 8th over. Nadeem Dar is on strike. He's doing some gardening out there in the middle. Probably just calming his nerves. Because every batsman who comes to face an iconic megastar like Parvez Rasool might be carrying some sort of nerves. That was an inside edge as the batsman was trying to punch it off the back foot. Parvez Rasool bowls them quick. And if he is able to just generate some sort of a movement, and if he is able to just let the ball grip and turn, he becomes a dangerous bowler to face. Here is Parvez. Once again, shout for LBW. That's in front, and that's out. Nadeem Dar has to walk back. Mohammad Umar has to walk back. Beg your pardon. They look identical from here, but it's Mohammad Umar who is not looking amused at all. And he has to walk back probably. Yes, he's going back. Parvez Rasool has the last laugh. He was not looking happy. Let's have a look. We are having a look on that. That was in line with the stumps, and that's gonna hit the leg stump. That's gonna hit the leg stump. That's out. That is stone dead. And Parvez Rasool has the last laugh. Umar, after batting so well, has gone back. And Sultan Warriors Baramulla in some immense pressure now. 58 for 4. This is the 8th over. And Parvez Rasool has got his wicket in the 2nd over. He's been on an expensive side, 1.4. Deliveries so far, 1 for 15. And the new batsman to replace Mohammad Umar. Once again, have a look. Have a look. That one pitched and then straightened. It was hitting him in front of Midland leg. That's always given as out. And I don't know why Mohammad Umar was having a question for the umpire and shaking his head. 58 for the loss of 4. 2 more balls to come. Parvez Rasool
Once more, this time fuller in length onto the pads, comes forward and plays it with a dead bat in front of him. The fielder from mid-wicket, short mid-wicket, comes in to pick that one up. Parvez Rasool, for the final time in this over, is going to bowl to Harshid. Harshid Parihar is on strike. The left-handed batsman. He's got a deep mid-wicket for him. He's got a deep square leg, deep backward square leg for him. Here is Parvez. And this time he's trying to left. Shot for LBW. This time the umpire shakes his head. That's brilliant bowling from Parvez Rasool. That's a good comeback after being hit for a boundary on the very first ball. And he's picked up a wicket. 2 overs for Parvez Rasool. 15 runs and 1 wicket. Sultan Warriors Baramulla after 8 of 58 for 4. Harshid is batting on a knot of 2. Nadeem Dar is batting on 2 of 4. और जो विकेट यहाँ हासिल की है परवेज रसूल ने कहीं ना कहीं उससे ज़रूर अब रनों पे अंकुश लगने का जो है अंकुश लग सकता है, क्योंकि एक के बाद एक विकेट खवाना आसान नहीं रहते है टीम के लिए। और 4 विकेट अब तक टीम ने खवाए 58 के स्कोर पर। पारी के कुल मिलाकर 8 ओवर अब तक समाप्त हो चुके और 90 ओवर की यहाँ से शुरुआत होने जा रही। बीच मैदान पर हर्षिद और उसका साथ दे रहे नदीम डार। हर्षिद रहेंगे सिट रॉकिंग एंड पर, नदीम डार नॉन सिट रॉकिंग एंड पर उनका साथ देने के लिए तैयार हो रहे। अंकित को तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। नया गेंदबाज पारी का 9वां ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं और उस मार्केट एंड शॉट से आप जाकर गेंदबाजी की जाएगी और हायर सेकेंडरी शॉट से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे दायात के बल्लेबाज मेरे साथ कॉम बॉक्स में बने हुए इरशाद भाई। और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इसके साथ और इसकी बदौलत आज आप मुझे इस मैच पर देख रहे हो और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ होल मैनेजिंग बॉडी ऑफ BPL बिजबेहारा प्रीमियर लीग की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस मैच पर लाके खड़ा कर रखा। अंकित गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे। लोगों की बड़ी तादाद आई है इस बड़े मुकाबले का मनोरंजन करने के लिए। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का मुकाबला हो रहा है। यहाँ से टीम बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ फिलहाल 90 ओवर की पहली गेंद करने के लिए अंकित तैयार। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार बैक फुट पर गए, गेंद को निकाला वहां कवर के इलाके में। जब तक वहां गेंद को फील्ड किया गया 1 रन के लिए आसानी के साथ दौड़ गए दोनों बल्लेबाज। 1 और रन की बढ़ोतरी यहाँ से टीम के स्कोर में देखने को मिले और अब जाकर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हर्षिद नए बल्लेबाज है, 2 गेंदों का सामना किया, 0 रन बनाकर अभी भी वो नाबाद है। तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंकित का सामना करेंगे। अंकित चले हर्षिद के लिए। हर्षिद वो सामना करने की तैयारी में। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, दाया और बाया कॉम्बिनेशन इस समय बीच मैदान पर। किस तरह से ये जोड़ी पारी खेलने में कामयाब हो सकती है, ये देखने वाली बात रहेगी यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। फिलहाल परवेज रसूल लगातार वहाँ फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चलो बैकवर्ड पॉइंट के साथ साथ स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी को भेजा गया। इस ओवर में अगली मरतबा चले, इस बार शानदार गेंद थी, फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया, डिफ्लेक्ट किया गेंद को, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन चुरा लिया। लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है इस मैदान के अंदर, क्योंकि BPL का ये सबसे बड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान पर जारी। और पहली बार आप वादी कश्मीर में इस तरह की लाइव कवरेज देख रहे हो और इस क्वालिटी के साथ आसान नहीं रहता है इस क्वालिटी के साथ लाइव कवरेज पहुंचाना। इस ओवर में अगली मतलब इस बार क्या लाजवाब और गजब की गेंद थी। अगर सीधी स्टंप की सीध में आती शायद विकेट बन सकती थी और पूरी तरह से जगाती हुई गई वह बल्लेबाज को। लाजवाब गेंदबाजी यहाँ गेंदबाज अंकित की ओर से देखने को मिल रही है। लगातार वहाँ आपस में बातचीत कर रहे हैं। 2 ऑफ फील्ड शायद रिप्ले का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया गया है। ये देखने वाली बात रहेगी इस बड़े मुकाबले में। That ball just pitched and it just whistled past the stumps. But let's have a look. Has it kissed the stumps? The umpire has asked the third umpire to have a look at it. Third umpire is taking some time. We are having that DRS available. The third umpire can have a look at the replay and tell us whether the ball has kissed the stumps or not.
From here, it did not look so. It looked that the ball might have missed the off stump. But we have to just look at it. Ankit bowled a brilliant delivery, squaring the batsman up completely. Play has been stopped for a moment. Let's have a look at this. Has the ball kissed the stumps? Third umpire is looking. He's having a close look at that. Was soft signal is not out. Soft signal is not out, and he has to have some conclusive evidence to rule that. Not out is the call from the third umpire. Not out is the call. So the batsman survives. That was very close to that off stump. $60 for the loss of 4. And umpire has to just go with his own decision. The soft signal was not out, and there was no conclusive evidence to rule that out. Because if the soft signal is out, you have to just you ought to have that conclusive evidence to rule against the soft signal given by the umpire on that occasion. 60 for 4, 8.3 overs have been bowled, and game is all set to just resume once more. Ankit, he's bowling from the market end. No wickets for 2 runs so far off his 3 balls. Bijbehara Sports Club, they have got a battery of these quality spinners. He comes in. That is leg spinning outside the off stump. That's played with a straight bat down towards long off. The batsman will pick up an easy single. That single takes the total to 61 for the loss of 4 wickets. 2 more balls to come in this over. Harshid is batting on 1. Nadeem Dar is at the other end. Harshid is on strike. Here is Ankit. That is beautifully bowled. He lands that leg spinner on a very good length, and the batsman was looking to prod it forward. His beaten all ends up. That's beautiful bowling from the right arm leg spinner, Ankit. We have got plenty of options for Parvez Rasool. This time short, rocks back onto the back foot, cuts it down towards deep point. Was fielding on the boundary. The batsman picks up an easy single. Yudhvir, Wasim Kachru, Imtiaz lefty, and Muhammad Umar have been dismissed so far. 9 overs done. It's 62 for the loss of 4. Nadeem Dar and Harshid are out there in the middle. They are trying to stitch a partnership, and they're definitely trying to just knock the ball in the gaps and pick up 1s and 2s, build up a partnership, and take their team to some sort of a platform where they can launch, where the lower order batsmen who can come and launch from there. They need a platform at the moment. Parvez Rasool, he's got a slip in place for the left-hander. Up to the stumps. Bowls. He goes over the top, but there is protection in the deep. The batsman will cross over and stroll over for a single. That single takes the total to 63 for the loss of 4 wickets as Parvez Rasool walks back to the top of his bowling mark. Parvez Rasool has got a long off, long on. Now the field changes for the right-hander, as here is Parvez Rasool once more. This time well read by Nadeem Dar. Chance of a run out. Oh, direct hit was needed. Direct hit was needed. The batsman was not in picture. That was a quick single in front of Aqib Mir. Look at that. Look at the batsman. He is not even in the picture. But that did not hit. That did not hit on that occasion. The throw from Aqib Mir
He was fielding at mid-wicket for the right-hander. He's fielding at cover for the left-hander. As here is the next delivery from Parvez Rasool. This time waited for the ball and then angled it away down towards backward. A point, cannot be any runs. The score stays at 64 for the loss of 4 wickets. It's very difficult for the two batters to just flex their muscles because nothing is being given to them by these spinners. The quality spinners of Bijbehara Sports Club. Be it Parvez Rasool, be it the left. As here is the next delivery from Parvez. This time he was trying to go across the line. He's beaten outside the off stump. Don't even try against Parvez Rasool because that ball was leaving the left-hander. You can watch this live on the official page of Bijbehara Premier League, the YouTube channel of Bijbehara Premier League and State Sports Live. Here is Parvez Rasool. This time forward in defense, giving that respect to that delivery, which Parvez Rasool always deserves because that was in line with the stumps and no room to play with. Long off, long on, deep mid-wicket, plenty of protection on the boundary. Deep backward square leg on the boundary as well. If the batsman tries a slog sweep, security going around. That's why the game has been paused for a moment. We are at Bijbehara Sports Field. Match number 4, Bijbehara Premier League. Sultan Warriors Baramulla are up against Bijbehara Sports Club. 64 for the loss of 4. The final delivery of the 10th over coming up. Here is Parvez Rasool to Harshid. Harshid is struck on the pads as he was trying to work this one away onto the onside. It's a dot to finish, halfway stage, 64 for 4. Sultan Warriors Baramulla struggling. As I welcome my partner and my friend Nasir Bhai in the commentators box. अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया इरशाद साहब। यहाँ जो बड़ा मुकाबला हो रहा है बिजबेहारा प्रीमियर लीग का, और देखा जाए अब तक जो बड़े मुकाबले हुए हैं, अगर तुलना करेंगे इस मुकाबले की उन मुकाबलों के साथ, तो ऊंचे पायदान पर मैं रखता हूँ इस मुकाबले को। हालांकि क्रिकेट में तो छोटा बड़ा होता नहीं है, पर जो सितारे दोनों टीमों में, ऐसे में ये परीक्षा है हर खिलाड़ी के लिए यहाँ जौहर दिखाने का। परवेज़ रसूल जो बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से यहाँ खेलने के लिए आए हैं और टॉस जीतकर फैसला लिया कि पहले फील्ड करेगी टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला। सुल्तान वॉरियर्स वो 2-2 हाथ कर रहे हैं और टीम का स्कोर 64 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। और नदीम डार साउथ कश्मीर की शान 5 के स्कोर पे नाबाद और उन्होंने कुल मिलाकर 8 गेंदों का सामना किया, जबकि हर्षिद 3 के स्कोर पे नाबाद हैं, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अंकित ने 4 रन पर खर्च किए हैं अपने पहले ओवर में और संभवतः वो अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और परवेज़ रसूल, अगर मैं कहूँ कि पूरे वादी कश्मीर की, हालांकि JNK की शान है वो, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही खासकर डोमेस्टिक सर्किट में, वो छाए हमेशा रहते हैं। टाइम आउट का इशारा अंपायर की तरफ से। और क्वालिटी क्रिकेट अगर आपको देखना हो उसके लिए आपको बिजबेहारा ज़रूर आना पड़ेगा, जिस तरह का क्रिकेट यहाँ हो रहा है। अगर मैं बात करूँ वादी कश्मीर की, हालांकि क्रिकेट तो हर जगह होता है, वादी कश्मीर की क्रिकेट का जो खुमार है सर चढ़ कर बोल रहा है, पर जो परिस्थितियाँ यहाँ हैं, जो वातावरण है, जो यहाँ का मौसम है, माहौल है, जो यहाँ दर्शक हैं, और उन सब को देखा जाए तो हालांकि इसकी बराबरी करना ये काफ़ी मुश्किल है। टर्फ तो मैंने नॉर्थ में भी देखे हैं और सेंट्रल कश्मीर में अगर देखा जाए वहाँ भी कुछ विकेट तैयार किए गए हैं, पर इस विकेट के साथ तुलना करना, किस तरह इसको मेंटेन किया गया है, ये काफ़ी मुश्किल है। और आप कर सकते हो इससे बेहतर, पर उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगेगी। This part has Parvez Rasool and ours part lacks Parvez Rasool. That's the difference, and this is the difference what you are watching on your screens. This is quality cricket and this is quality stuff, and RJ is doing an outstanding job to the left of me here. He is keeping himself on his toes. RJ Bashir, State Sports Live admin, is doing, and he is behind this all, and behind this quality stuff all is none other than Parvez Rasool. और आप RJ की जिक्र कर रहे थे, आजकल हालांकि चारों तरफ आपको
कमेंटेटर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, पर ये आरजे की देन है जिसने पहले ये किया था JNK में, जो कैमरा उन्होंने लगाया था। अब लोगों ने यहाँ जो बाकी पेज एडमिन्स हैं उन्होंने भी अब कैमरा सेटअप तो ज़रूर लाया, पर आरजे उससे कुछ आगे अब निकल गए हैं। अब एक कैमरा से काम चलने वाला तो नहीं है, और ये बड़ी बात है। ये मिसाल हैं दूसरे जो पेज एडमिन हैं और जिनकी ये कोशिश रहती है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। आपको भी मेहनत करनी होगी तो आप इसे बेहतर कर सकते हो। और परवेज रसूल चमकता हुआ सितारा और बिजबेहारा प्रीमियर लीग का ये बड़ा मुकाबला, जहां बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब वो 2-2 हाथ कर रही हैं सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर के साथ। नदीम डार 5-8 गेंदों का सामना किया और 64 रन। टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। वसीम काशरू इस टीम लाइनअप में है, इम्तियाज लेफ्टी हैं, जुहूर जोलो हैं, नदीम डार हैं, जहांगीर लोन हैं, हर्षिद हैं, उवैस बाबा हैं। एक से बढ़कर एक नाम है इस टीम लाइनअप में, पर यह आसान रहने वाला नहीं है। घरेलू परिस्थितियां और लोकल बॉय हैं यहाँ के परवेज रसूल, इससे में उन्हें लोकल क्राउड का सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा। और इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि परफॉर्म करने का जो दबाव वो ज़्यादा रहता है। परवेज रसूल दूसरी एक खिलाड़ी बने थे JNK के मिथुन मिन्हास को छोड़कर, और मिथुन मिन्हास के बाद वो दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने IPL में हिस्सा लिया था JNK की तरफ से, और पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने थे। और 1989 में उनका जन्म हुआ था, लगभग 35 वर्ष के हैं। और बिल्कुल 1988 जब तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था उसके 1 साल बाद परवेज रसूल का जन्म हुआ था। और गेंद को फील्ड किया गया, लगभग पॉइंट के आसपास थ्रो किया गया, लॉन्ग ऑन की ओर गेंद गई है, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए 1 रन खाते में। इरशाद भाई, ऑफिशियल कमेंटेटर जेके क्रिक टाइम के, आज जो भूमिका हम निभा रहे हैं बिजबेहारा प्रीमियर लीग के इस पेज से, ऑफिशियल पेज से हम लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। आमिर रशीद भी बिल्कुल कॉम बॉक्स में बने हुए हैं, और ये बड़ी बात है कि जब आपको तलब किया जाएगा, और इसे बड़ा तोहफा अपेक्षा नहीं की थी, फिर से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। रन लेने का इरादा किया था ज़रूर, पर इरादा बदला। स्कोर ठहरा हुआ 65 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 10.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। नदीम डार 6 के स्कोर पे नाबाद, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे ज़रूर, और हर्षिद 3 के स्कोर पे नाबाद। कुल मिलाकर उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया। बाएं हाथ के हर्षिद वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामना करेंगे गेंदबाज अंकित का, दाएं हाथ के गेंदबाज अंकित की गेंद को निकाला, गेंद फाइन लेग की ओर जा रही है, उस ओर खिलाड़ी तैनात, क्या वो रोकने में सफल हो जाएंगे या नहीं? और गेंद गोली की गति से सीमा रेखा से बाहर गई है। 4 रन। इस चौके के साथ 69 हुआ टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। 69 for 4 on that occasion. Drifting onto the pads was Ankit, and Ankit is resembling in his action to the Afghanistan maestro, that right arm spinner. This time it's short, it's helped on its way, but straight to the fielder, a deep backward square leg. He's bowling a lot of stuff from the front of the hand, and the ball is just gripping and turning. And that's the exact delivery when he dismissed a batsman, almost dismissed a batsman. That was referred to the third umpire. The third umpire ruled in favor of the batsman. As here is the next delivery from Ankit onto the pads. This time drifted away, flicked away, beg your pardon. That one was drifting onto the pads and flicking it away in front of mid-wicket, picking up an easy single and moving to the other end, taking the total to 71 for the loss of 4. Harshid is batting on 8 of 13. Nadeem Dar is batting on 7 of 10. The current run rate has dropped down to 6.55. Here is Ankit once more. This time he was trying to bowl that back of the hand delivery. Lot of stuff comes from front of the hand, and this time he was using his back of the hand, trying to just bowl that perfect leg spinner to the right hander. But the ball kept straight, and it was knocked down the ground for one more. 11 overs done. It's 72 for the loss of 4 wickets. Sultan Warriors Baramulla in all sorts of trouble. They need a partnership. They need someone to ignite a spark out there in the middle. They need some cameo out there in the middle, because they have got Nadeem Dar, they have got Harshid, and Harshid and Nadeem Dar are having a quick chat out there in the middle. 72 for 4.
9 more overs to come. Bijbehara Premier League. Edition 3. Level up your game. Play fearless are the themes of this year's BPL. And the message is as simple as that. Say no to drugs. Say yes to life. Hello. It's going to be Parvez Rasool to bowl. Round the stumps. This time is trying to go for the sweep. He's gone in front of stumps. The umpire's finger goes up and Parvez Rasool has his second. Once again the batsman was not looking happy. Have a look once more. That one, that was out. That was stone dead. Pitching on and then straightening. Hitting him in front of the middle and leg stump. And he was a goner once it hits the stumps. Once it hits the pad in front of stumps. That's brilliant bowling by Parvez Rasool. And Harshid has to walk back. That was flighted. He was looking for that reverse sweep. And that was hitting in line with the stumps. So wicket number 2, wicket number 5 for Bijbehara Sports Club. Parvez Rasool and Bijbehara Sports Club are doing an outstanding job in keeping this Sultan Warriors Baramulla, the rampant 11 of Sultan Warriors Baramulla, in check. New man in walking to the middle is Jahangir Lone. He has got a job on his hands. Here is Parvez Rasool to Jahangir. Jahangir on drives beautifully. Down towards long on, will pick up a single. He's off the mark with that single. And Harshid is the man who has been dismissed. 73 for the loss of 5 wickets now. Parvez Rasool is going to bowl to Nadeem Dar. There is a mid-wicket in place. Aqib Mir hasn't bowled yet. Right arm over the stumps to Nadeem Dar, who shoulders arms down the leg side. That will be given as wides. Parvez Rasool is not looking happy at all. Probably he was trying to just spin the ball in from outside the off stump. There is a short fine leg in place, and there is a short third man in place as well. Here is Parvez. Once again, good delivery. Onto the stump, stucking the batsman up, keeping him quiet. Dot balls after dot balls being bowled by Parvez Rasool. He's in his final over of the quota. He's picked up 2 wickets. He's always among us the wickets. Here is Parvez Rasool once more. A catching extra cover in place as well. That is bowled him! Nadeem Dar cannot believe what he has seen. He has seen a ghost in the form of Parvez Rasool. That one pitched, it turned, and he had no time whatsoever. The off stump has been packed back, and Parvez Rasool has his third. Sultan Warriors Baramulla in all sorts of trouble. You can hear to the chants. You can hear to the roar of the crowd. He's a local boy. He is a local lad. And he has done a tremendous work to uplift this part's cricket. In particular, he has been a revelation in this part of the world. Look at that. That one gripped. That one turned. And he had no time. The off stump was packed back. Here comes the man of crisis. Zuhur Zolo. Zuhur Zolo is walking to the middle. That sinking ship of Sultan Warriors Baramulla at WPL in the semi-finals. He rescued that ship and he hit a 19-ball 46. And Sultan Warriors Baramulla should thank this man. He's always there. He always stands tall. But this time around, he has a different proposition in the form of Parvez Rasool, who is doing brilliance with the ball in hands. Parvez Rasool. 19 runs and he's picked up 3 wickets. 2 more balls to come in the spell. The pressure is being applied. There is a catching mid-wicket. There is a catching extra cover. There is a leg slip as well. There is a deep backward square leg as well. Parvez Rasool. There is a deep mid-wicket.
As here is Parvez Rasool for the 5th time in this over. Leg slip on. Good delivery. This time knocked away onto the leg side by Zuhur Zolo. Picks up a single. Gets a hug from Parvez Rasool. And opens the account with that single. 75 for 6. One more ball to come in Parvez Rasool's 4th over. What a bowler he has. What a bowler he is, beg your pardon. And he's got experience, he's got skill. Jahangir Lone survives. That is a beautiful delivery. Coming in from outside the off stump, and somehow Jahangir Lone keeps this away. An outstanding spell from Parvez Rasool comes to an end. 4 overs, 14 dots, 20 runs, 3 wickets. This is Parvez Rasool's brilliance for you. Sultan Warriors Baramulla in all sorts of trouble. 75 for 6, 12 overs done. शुक्रिया इरशाद। इस वक्त बारामूला और बीजबेहरा के दरमियान बीजबेहरा प्रीमियर लीग का चौथा मैच खेला जा रहा है। मुश्किलात से 2-4 है बारामूला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम, मुश्किलात से 2-4 है। 75 के उस स्कोर पर उनके 6 मुस्तनद बैट्समैन वापस पवेलियन लौट चुके हैं। क्रीज पे मौजूद है जहांगीर लोन और ज़हूर जोलो। दोनों मैच का पासा पलट देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बारामूला को इस शराकत की एक ज़रूरत है, यानी कि ज़हूर जोलो और जहांगीर लोन मैच का पासा पलट देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। 13वें ओवर का खेल शुरू होने वाला है। अंकित गेंदबाजी कर रहे हैं मार्केट एंड से, उनका सामना कर रहे हैं ज़हूर जोलो। गेंद की अच्छी गेंद थी, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है डीप लॉन्ग ऑन की जानिब। चहलकदमी के अंदाज में दोनों बैट्समैनों ने छोड़ बदल दिया, यानी कि 1 रन का इजाफा स्कोर में। इस 1 रन के इजाफे के साथ ही स्कोर हुआ 76, 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अब जहांगीर लोन सामना करेंगे अंकित का। आज बहुत ही अच्छी और नपीतुली गेंदबाजी की परवेज ने। शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को बैक फुट पर जाके गेंद को कलाइयों के सहारे खेले मिड विकेट की जानिब। जब तक डीप मिड विकेट से आते खिलाड़ी तब तक दोनों बैट्समैन 1 रन का इजाफा स्कोर में कर चुके थे, यानी कि 77, 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर 13वें ओवर का खेल जारी है। बीजबेहरा हायर सेकेंडरी तमाशाइयों से इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। अंकित गेंदबाजी कर रहे हैं मार्केट एंड से। अंकित गेंद करेंगे ज़हूर जोलो को। गेंद की अच्छी गेंद थी, एक मरतबा फिर ढीले हाथों से इस गेंद को खेले डीप मिड विकेट की जानिब और 1 रन हासिल किया ज़हूर जोलो ने। ज़हूर जोलो का स्कोर हुआ 2, 78, 6 खिलाड़ियों के आउट होने पर। 13वें ओवर का खेल जारी है, यानी कि 6.24 की रन औसत से रन बन रहे हैं। अंकित आए, गेंद की अच्छी गेंद थी, इस मरतबा इस गेंद को खेले डीप लॉन्ग ऑफ की जानिब और 1 रन हासिल किया। अब दोनों बैट्समैन बड़े मोहतात अंदाज में इनिंग को आगे बढ़ा रहे। उन्हें Ankit is bowling. As I already mentioned, that his action is resembling Najibullah Zadran of Afghanistan. He bowls a lot of stuff from the front of the hand. This time worked away past square leg, will pick up a single and bring Jahangir Lone back on strike. Zuhur Zolo is doing the right thing. He is rotating the strike, he's taking the scoreboard over. Jahangir Lone is batting on 3 or 4. He's strong against spin, but this ground has big boundaries. The dimensions are bigger. On the offside and particularly towards that cover and extra cover region. This time he rides the bounce, was trying to go square up the wicket, not making a proper contact. It's a dot ball. Ankit, 17 without a wicket. 3 overs have been bowled by Ankit. 1, 2, 3, 4, 6 bowlers have been used. And Parvez Rasool is the pick of the bowlers once again. 3 for 20 off his 4. As over number 13 comes to a close, it's 80 for 6. Nasir bhai, the toss was won by Bijbehara Sports Club. They decided to field first. I think Parvez Rasool had a better reading of the surface, and that's why he decided to field first. And once he decided to be field first, the ball started misbehaving from ball number 1. And in between, there was some counter attack from the Baramulla batsman, but then Parvez Rasool came up
and had the last laugh, picking up 3 wickets. जो होम कंडीशंस हैं तो उनका लाभ तो ज़रूर मिलेगा यहाँ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आकिब मीर, दाएं हाथी गेंदबाज वो गेंदबाजी करेंगे। आकिब मीर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने हैं ज़हूर जोलो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आकिब मीर की गेंद मिडल स्टंप की सीध में स्टंप्स को कवर किया, गेंद को धकेला, गेंद शॉट मिड विकेट क्षेत्र की ओर गई है। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। 1 रन खाते में, इस 1 रन की सहायता से 81 रन, टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 13.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब जिसमें एक से बढ़कर एक नाम आपको नजर आएगा। आकिब मीर चले जहांगीर लोन को, इस बार लेग स्टंप की सीध में गेंद को धकेला, गेंद उसूल गई है। जब तक इनको फील्ड करने की कोशिश की जाएगी पर मिस फील्ड हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। चौके के साथ 4 और टीम के खाते में और टीम का जो स्कोर है 81 से बढ़कर अब 85 हुआ है 6 विकेटों के नुकसान पर। 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है और 13.2 ओवर का खेल कुल मिलाकर 85 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ज़हूर जोलो वो 5 के स्कोर पे नाबाद है और गेंदबाज आकिब मीर चले ओवर द स्टंप्स। जहांगीर लोन को इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद हवाई रास्ते गई है, मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। पहला बड़ा स्ट्रोक जहांगीर लोन के बल्ले से। मौका ताड़ा देखते हुए कि आकिब मीर खतरनाक गेंदबाज हैं, उन्हें अगर वो समय देंगे सेट होने के लिए फिर वो विकेट तो जरूर चटकाएंगे। ऐसे में जहांगीर लोन और सब्र की जो इंतहा थी वो सीमा अब खत्म हुई है और वो बड़े स्ट्रोक के लिए गए। गेंद मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जहांगीर लोन के बल्ले से एक छक्का देखने को मिला, एक और बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी उस ओर आ रहे हैं। फाइनल लेग की तरफ गेंद गई, दायरे से बाहर गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा और तब तक खाते में रन का और इजाफा। अंपायर के इशारे की अभी भी प्रतीक्षा, क्या इस पे 1 रन आया या 2 रन? 1 रन खाते में, इस 1 रन की सहायता से ज़हूर जोलो 5 के स्कोर पे नाबाद, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 92 रन टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। आकिब मीर सामने है ज़हूर जोलो, स्टंप्स को फिर से कवर किया, गेंद उसूर गई है शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जहां खिलाड़ी तैनात परवेज रसूल इस टीम के प्रमुख हथियार, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, कोई रन नहीं, डॉट गेंद के साथ ओवर का खेल समाप्त हुआ। शेयर कीजिएगा लाइव कवरेज को। 92 for 6, 14 overs done, 6 more overs to come after this. And Parvez Rasool has completed his quota of 4 overs. Akib Mir in his first over was expensive, gave away 12 runs. And this is going to be an onslaught from Jahangir Lone and Zohar Zolo. They have got the license now because only 6 overs after this, but they have to bat sensibly in between as well. They would definitely go for shots. Jahangir Lone is very strong against spin, and Zohar Zolo, you know, we have seen some outstanding innings from Zohar Zolo. Parvez Rasool, he's having a chat with Jahangir Lone, Zohar Zolo, who are having a hydration break out there in the middle, and with the 12th man of the team as well, Sultan Warriors Baramulla. And look at Parvez Rasool having a drink as well in the middle. Parvez Rasool leading Bijbehara Sports Club in this season's Bijbehara Premier League. Shiva Singh is back into the attack. 10 for 1 so far from his 2 overs. And Jahangir Lone has moved himself to 14 of just 8 balls. 2 good strokes, a 6 and a boundary. Will he keep the momentum going? Deep mid wicket in place. Long on in place. Short square leg, deep backward square leg in place. Short fine leg in place. Here is Shiva Singh. To Jahangir Lone down the leg side. That will be given as wides. And immediately Parvez Rasool comes up to Shiva Singh to have a word with him. 93 for the loss of 6 in the 15th over. First ball is a wide. Shiva Singh once more to Jahangir Lone. Jahangir Lone comes forward and plays this defensively, gives the respect that the ball deserves. On the offside, Parvez Rasool is at a catching extra cover.
There is a backward point and there is a wide gully. Here is Shiva Singh once more to Jahangir Lone. He was trying to go outside. He was trying to go across the line over mid-wicket. He gets an outside edge and the ball races away to the third man boundary for 4. Zoor Zolo is not looking happy with that shot of Jahangir Lone. Jahangir Lone always resorts to that shot across the line as he collects a number of runs with that shot. That is a favourite shot of Jahangir Lone, but he was about to be dismissed on that delivery. Shiva to Jahangir Lone once again, forward in defence. That is sensible batting from Jahangir Lone. This innings, he's on 18 of 11, 97 for 6. 3 more balls to come in the 15th over. Shiva Singh so far hasn't that impact in this innings. That's quicker on the stumps, worked away in front of the fielder coming from deep mid-on. The batsman will pick up a single and Zoor Zolo is back on strike. ज़ोहर ज़ोलो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनका निजी स्कोर 5 हुआ, 7 गेंदों का सामना किया, 98 रन टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदें अब तक हुई हैं इस ओवर की और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शिवा सिंह की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले को गेंद की लाइन से जुदा किया और गेंद सीधे आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। बताता चलूँ आपके लिए, बिजबेहरा प्रीमियर लीग के इस बड़े मुकाबले में टॉस जीतकर फैसला किया सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के खिलाफ यहाँ बिजबेहरा स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान आकिब मीर ने कि पहले वो फील्ड करेंगे। हालांकि परवेज़ रसूल इस टीम के कप्तान हैं, उन्होंने ये फैसला लिया कि पहले वो फील्ड करेंगे और फील्ड करने का वो फैसला सही साबित तो नहीं हुआ था और यहाँ सुल्तान वॉरियर्स के लिए, और सुल्तान वॉरियर्स को एक के बाद एक झटका लगा और परवेज़ रसूल ने जो फैसला किया था बिजबेहरा स्पोर्ट्स क्लब की दृष्टि से देखा जाए तो वो सही साबित हुआ वो फैसला। और दर्शकों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है इस मैदान में, जो ऑनलाइन भी लाइव कवरेज के माध्यम से जो घर बैठे दर्शक आनंद ले रहे हैं लाइव कवरेज का, और उनसे मेरी गुजारिश रहेगी लाइव कवरेज को शेयर करना ताकि अन्य व्यूअर जुड़ सके इस मंच के साथ। यहाँ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंकित का सिरा बदला गया, क्या सिरा बदलने से उनकी तकदीर बदलेगी, क्या अब विकेट मिलेगी या नहीं? अब तक विकेट तो नहीं मिली, 17 रन खर्च किए हैं चौथे ओवर की पहली गेंद। अपने स्पेल का वो आखिरी ओवर कर रहे हैं, वापस धकेला इस गेंद को, गेंद फील्ड हुई, फॉलो थ्रू में कोई रन नहीं। जहांगीर लोन, हम तो हमेशा कहते हैं नॉर्थ कश्मीर का कोहिनूर है, पर यहाँ ये परीक्षा है उनके लिए, एक इम्तिहान है और देखना होगा इसमें वो सफल हो जाएंगे या नहीं। अंकित के गेंद जहांगीर लोन को, और जहांगीर लोन बैक फुट पर चले गए, स्वीपर कवर का इलाका संभाला वहाँ खिलाड़ी ने, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। टर्फ और मैटिंग ज़मीन आसमान का अंतर है और आपको अच्छा खासा उछाल मिलता है मैटिंग क्रिकेट की। अगर मैं जिक्र करूँ तो आप खड़े खड़े स्ट्रोक लेना पसंद करते हैं, बैक फुट पे स्ट्रोक वो काफ़ी आसान रहता है, और जो साइड स्ट्रोक आप लेते हो, अगर मैं जिक्र करूँ मैटिंग की, साइड स्ट्रोक चाहे पुल हो या कट हो, वो काफ़ी मजबूत रहता है उन खिलाड़ियों का। पर जब आप चले आते हो टर्फ पे खेलने के लिए तो आपको परिस्थितियां जांचनी पड़ती हैं विकेट की, विकेट किस तरह का मिजाज है, विकेट का किस तरह खेलना है, क्या उछाल है, क्या बाउंस है विकेट में, और उस हिसाब से आपको बल्लेबाजी करनी होती है। इस बार ज़ोहर ज़ोलो ने गेंद को खेला, गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई है ज़रूर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, 1 रन खाते में। और हालांकि मिड विकेट क्षेत्र की तरफ लिया गया स्ट्रोक। इस सिंगल के साथ 100 रन टीम का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब जहांगीर लोन वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जहांगीर लोन सामना करने की तैयारी में इस बार एक और बड़े स्ट्रोक के लिए गए, गेंद उस दिशा में गई, वहां खिलाड़ी तो जरूर तैनात थे पर कैच छूटा और बदले में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। That was a chance there. Once again, front of the hand, that delivery. And Jahangir Lone was trying to take him on. There was a fielder at the long on boundary. I think it fell short and it went into the boundary for 4. The partnership, 30 of 24. It is Ankit once more. This time, that was surprising Jahangir Lone as that ball kicked up from a length. Ankit is bowling leg spin in between. And a lot of deliveries bowling front of the hand, those slider kind of deliveries. So far he has been mightily successful. 23 without taking a wicket. He's bowling in his 4th over. He has been miserly. Here is that leg gully once again. Here is Ankit. This time that is Mammoth.
Don't look bothering towards that. It's coming beneath us here at in the commentary box. That's gone for 6. Jahangir Lone pounces onto that and sends it soaring over deep mid wicket for a huge 6. और जहांगीर लोन अगर वो विकेट पर रहे तो यहाँ जो सुल्तान के फैंस हैं वो तो यही चाहेंगे कि जहांगीर लोन अंत तक नाबाद रहे, पर बिजबेहरा स्पोर्ट्स क्लब के जो समर्थक हैं वो तो कतई ऐसा नहीं चाहेंगे और उन्हें भी इस बात का इल्म है जैक का अंत तक नाबाद रहना ये काफ़ी खतरनाक होगा फिर साबित टीम बिजबेहरा स्पोर्ट्स क्लब के लिए। जहांगीर लोन का स्कोर 24 रन, अब तक जो भी उन्होंने स्ट्रोक लिया विश्वास के साथ लिया और आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। जहांगीर लोन का 24 है उनका स्कोर, 15 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के जड़े, 104 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। परवेज रसूल जो इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, यहाँ के लोकल बॉय हैं, यहाँ के निवासी हैं और मैदान के हर कोने के मतलब उनको जानकारी है, वाकफियत है इस मैदान की और ऐसे में कोई भी लक्ष्य यहाँ चेज हो सकता है। और बड़ी बात यह है विकेट पर खेलने का जो अनुभव उनके पास काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा है वो टीम के काम आना चाहिए। गेंदबाज ज़हूर जोलो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 6 के स्कोर पे 10 गेंदों का सामना किया। जहांगीर लोन ने 24 बनाए, 15 गेंदों का सामना किया और वहाँ साइड स्क्रीन को शायद सेट किया जा रहा है, उसमें कुछ खराबी नज़र आ रही है। 104 6 विकेटों के नुकसान पर 15.4 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और इस ओवर की 5 विकेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंकित 23 रन, 3.4 ओवर का खेल अब तक और हालांकि यहाँ ओवर समाप्त हुआ, स्कोर कार्ड भी अपडेट तो नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट स्कोर जो दर्शा रहा है वो 140 से ज़्यादा दर्शा रहा है और जहांगीर लोन और उनका योगदान क्या रहा हम बताने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। Jahangir Lone is batting on 30. He's played some gorgeous shots and some ferocious shots as well. Spin has been taken off and it's time for some seam bowling. Ishfaq Bresnan is back into the attack. Zohar Zolo is batting on 6 of 10. Jahangir Lone is batting on 30 of 16. And this has been a partnership and that was always required by Sultan Warriors Baramulla, where they were when they were 82 for the loss of 6 wickets at one stage. Beg your pardon, they were 62 for the loss of 6 wickets at one stage. And this partnership has done immensely well for the 7th wicket between Zohar Zolo and Jahangir Lone. 110 for the loss of 6 wickets. 16 overs have been bowled. There is slight pause in the game. Parvez Rasool is marshalling his troops. Wicketkeeper will be standing back. Ishfaq Bresnan, he's bowled quick. He's got that bounce and carry. He bowled a terrific opening burst from the market end. And from the market end, he's going to bowl his 3rd. 4 for 1 so far from his initial 2 overs. And Jahangir Lone is at the non-striker's end on 30 of 17. Here is Ishfaq Bresnan. First ball of the 17th over. That's a peach. He was coming down the wicket. Ishfaq Bresnan shortening the length. Got the ball to bounce once more. Got the ball to bounce as well. And almost an edge to the wicketkeeper, who puts it down nonetheless. It's a dot ball to start the 17th over. The total is 110 for 6. Plenty of protection. Every boundary has been protected. Ishfaq for the second time in the 17th over. This is in the air. As he was trying to just flick it, closing the bat face early. Shiva Singh fields coming from deep mid-wicket boundary. The batsman cross over for a single. Now this will be interesting to see. Jahangir Lone batting on 30 of 17 up against fast bowling. It has been a struggle for Jahangir Lone of late. This time around he is set. Can he launch a counter attack against the faster men as well? Here is Ishfaq Bresnan with a long off, deep mid-wicket and square leg in place. He was trying to go across the line once more, but that was quick. That was very quick to the liking of Jahangir Lone. Nowhere close to the line of the ball.
And that was beautifully bowled by Ishfaq Bresnan. Back of a length outside the off stump. Deep mid-wicket. Long on. There is a fielder at deep backward square leg. So plenty of protection. That onside boundary has been protected. These are the hot spot areas for Jahangir Lone. He likes to go across the line. On the offside, there is an extra cover inside the circle. There is a backward point inside the circle. Short third man has been asked to go at the boundary. Is going to the boundary at third man. Now a backward point. There is a wideish gully. Mike has been asked to come closer to the point fielder. Outside the off stump. Once again a dot ball. Ishfaq Bresnan has a word. This is a banter going on between the two. Jahangir Lone and Ishfaq Bresnan. As he lends it on a length once again. Jahangir Lone fast bowling and Jahangir Lone always a struggle. But again a spin. He has a dominant role, and so far fast bowling has had the upper hand in this innings as well. और जहांगीर लोन वो दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में अब तक उन्होंने 30 बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का स्कोर 111 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इशफाक ब्रेस्नन ओवर द स्टंप, जहांगीर लोन को मिड विकेट की तरफ खेला गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। क्या शानदार और दिलकश स्ट्रोक था जहांगीर लोन के बल्ले से, गेंद मिडिल ऑफ द बैट जाके टकराई और जो आवाज एक मुद्रा आवाज आई, नतीजा भी बेहतर, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड जो टीम का है 117 6 विकेटों के नुकसान पर, और 16.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है। जहांगीर का स्कोर 36 रन और उन्होंने 20 गेंदों का कुल मिलाकर सामना किया। शेयर कीजिएगा लाइव कवरेज को। बिजबेहारा प्रीमियर लीग का ये बड़ा मुकाबला जहां सुल्तान वॉरियर्स बारामूला टॉस हारकर वो बैटिंग कर रही है और ये फैसला लिया फील्ड करने का। बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान परवेज रसूल ने ऑप्शन से बाहर गुड लेंथ बॉल पर गेंद ने टिप्पा खाया, और जो भाईना पैर बल्लेबाज जहांगीर लोन का था वो काफ़ी आगे निकल आए थे स्ट्रोक खेलने के लिए, और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे आई विकेट कीपर के पास। इस डॉट गेंद की सहायता से यहाँ 17 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 117 6 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल आना बाकी है। जहांगीर लोन और ज़हूर जोलो, ये दो बड़े नाम अगर मैं कहूँ सुल्तान वॉरियर्स के खेमे में, जिनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। वसीम कास्ट्रो, इम्तियाज़ लेफ्टी, वो चले गए और एक एक करके वो साथ छोड़कर चले गए, और जहांगीर लोन जो टीम के कप्तान हैं उस पर दोहरी जिम्मेदारी थी, विकेट बचाना और रन गति को बढ़ाना, उसमें सफल होते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और इरशाद भाई, ये आसान रहने वाला नहीं होगा, पिछले जो 3 ओवर अब बचे हुए हैं उनमें रन बनाना, पर ज़हूर जोलो और जहांगीर लोन के लिए ये रूटीन वर्क है और हर दिन वो यही काम करते हैं, टीम को संकट से निकाल रहे हैं। पर इस मैदान की अगर मैं जिक्र करूं, बैटिंग नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, टर्फ क्रिकेट है और इससे में ये आसान रहने वाला नहीं है, ये परीक्षा है उनके लिए। कहाँ देख रहे हो आप सुल्तान को, क्या लक्ष्य मिल सकता है चीज़ करने के लिए। 3 ओवर बचे हुए हैं 117 6 विकेटों के नुकसान पर। 2 gun players are out there in the middle. Switch hit this time again as Shiva Singh. Not making any contact is Zuhur Zolo. Zuhur Zolo and Jahangir Lone, they always have a reputation of taking the opponents on when it comes during the crunch times. As here is Shiva Singh once more to Zuhur Zolo. He was trying to throw kitchen sink at that. That's a wide down the leg side. These two have got a reputation to go against and to go after the bowling once their team requires anything. And they require runs, they require quick runs. That was down the leg side. He was trying to shuffle across, but the umpire gives that as a wide. That was slow outside the off stump. Does not get any bat to that, but he will run across. We'll wait for the umpire's signal. That is a bye signal by the umpire. 119 for the loss of 6 wickets. And so far, one legal delivery has been bowled in this over by Shiva Singh. Here is Shiva to Jahangir Lone. Interesting battle. Full toss. He goes down the ground. He goes straight as a die. That's 4 more.
Jahangir Lon is playing a blinder out there in the middle. He moves to 40 up 22. That was a full toss, and that was ferocious from the bat of Jahangir Lon. Shiva Singh has to be careful. Again as this strong boy. Full toss, and that was drilled. Shiva once more. This time Jahangir Lon has clubbed it in the air and out of the ground. That's caught in the crowd. 6 more. That is trademark Jahangir Lon swipe across the line, and that takes it well over the fielder at deep mid wicket, and that goes into the crowd for 6 more. Partnership, 50 partnership comes up, 55 of 36. This has been a terrific partnership. 129 for 6, Shiva Singh to Jahangir Lon. Jahangir Lon once again. He has smashed it, and he has picked up bones out of that. That's 6 number 2. Back-to-back 6s. Jahangir Lon is on fire. Look at that from outside the off stump. Launching it, and that's gone many a mile. That's gone over the cow corner. और ये जो छक्का था न सिर्फ अर्धशतक जहांगीर लोन का पूरा हुआ, बल्कि इस स्ट्रोक ने मजबूर किया परवेज रसूल को। वो बातचीत कर रहे हैं अब शिवा सिंह के साथ, और पहली दफ़ा ऐसा देखने को मिला। कुछ चिंतित नज़र आ रहे हैं खिलाड़ी। यहाँ जो लोकल क्राउड है अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के समर्थक हैं या सुल्तान के, और उन्हें भी इस बात का विश्वास है एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जहांगीर लोन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार कुछ बेहतर लाइन, गेंद को डिफ्लेक्ट किया, गेंद उछल गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, जब तक इनको फीड करके थ्रो किया जाए। 1 रन खाते में। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 9 के प्लस व्यूवर हैं स्क्रीन पर, आप बढ़ा सकते हो ये तादाद। बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब का ये मैदान सज धज कर आया है आपके लिए, जहां से हम लाइव विजुअल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़े मुकाबले की सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का मुकाबला हो रहा है बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ। 18 ओवर समाप्त, 136 टीम का स्कोर। 6 विकेटों के नुकसान पर जहांगीर लोन ने 53 बनाए, 25 गेंदों का सामना किया। जहूर जोलो वो 7 रन बनाकर नाबाद, 50 का स्ट्राइक रेट, 14 गेंदों का सामना किया। और हालांकि ये पारी अगर किसी और मैदान में वो 14 गेंदों का सामना करते, शायद जो स्ट्राइक रेट वो 200 से अधिक का होता, पर यहाँ परिस्थितियाँ कुछ मुख्तलिफ थी और टीम दबाव में नजर आ रही थी। ज़ोहर जोलो को इस बात का इल्म था कि जहांगीर लोन का कनेक्शन कुछ बेहतर नजर आ रहा है, शायद इसीलिए उनकी ये कोशिश रही थी कि सिंगल लेकर जहांगीर को ज्यादा स्ट्राइक दी जाए। जहांगीर लोन अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा? इशफाक ब्रेस्नन उन्हें तलब किया गया है। पहली गेंद करने के लिए तैयार, दाएं हाथ के गेंदबाज जहांगीर लोन को क्या बड़ा स्ट्रोक है, गेंद लॉन्ग ऑन बॉर्डरलाइन से बाहर, 6 रन। That gets the crowd going. That has been deposited onto the roof of a house. The ball has gone forever. Look at that. I would love to have that in the replay. That ball has gone forever. That was outstanding. Oh, that is mammoth. Look at the ball. It has landed onto the roof. My word. Jahangir Lon, he's on a different level today. 59 of 26. And he's taking Ishfaq Bresnan for an absolute liking in this match. Everyone is a mute spectator to that shot. That was the shot of the tournament so far. और बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रोक, ताकत खूब लगाई इस स्ट्रोक के पीछे। जहांगीर लोन आप उन्हें मिड विकेट लॉन्ग ऑन का जो इलाका है ज़्यादा रास आता है, उस दिशा में गेंद आएगी, यकीनी तौर वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। और इरशाद लवली उमर दिल मांग रहा है मोर, और ये लवली है जो स्पोर्ट्स ग्राउंड के जो ऑफिशियल कमेंटेटर हैं, पेज एडमिन हैं, मेरे भाई हैं, और हमेशा उनके साथ जो टर्म्स हैं हमारी काफ़ी बेहतर रही हैं, अच्छे इंसान हैं, और वो आनंद ले रहे हैं लाइव कवरेज का। जहांगीर लोन दाएं हाथ के गेंदबाज, और यहाँ जो आरजे बशीर हैं करता धरता इस इवेंट की अगर मैं जिक्र करूं, जो लाइव कवरेज का जिम्मा उन्होंने लिया है और बखूबी से वो अपने जो काम है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और लवली उमर के लिए सलाम भेज रहे हैं, और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद करने की तैयारी में, और सामना करने के लिए वहाँ तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में है। जहांगीर लोन
सामना करेंगे इशफाक ब्रेस्नेन का। और इशफाक ब्रेस्नेन अब कुछ हद तक इरशाद भाई दबाव में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि जैक का बल्ला अब खामोश रहने वाला नहीं है। Here is the next delivery to Jahangir Lone, and Jahangir Lone goes high, he goes hard, he goes handsome, this time to the opposite direction, over long off, back to back sixes. और 10 के व्यूअर आनंद ले रहे हैं लाइव कवरेज का। ये है खुमार बिजबेहाड़ा प्रीमियर लीग का, और सर चढ़कर बोल रहा है आप शेयर कर सकते हो लाइव कवरेज को। और समर्थक वहां आए हैं सुल्तान वॉरियर्स के, वो कुछ तोहफा देने के लिए आए हैं जहांगीर लोन को। और जहांगीर लोन लोकप्रिय नाम है न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में, और उनका डंका बजता है साउथ कश्मीर में भी। उन्होंने आज करके दिखाया है। Is that Abid Rabadi? Is that entertainer? He's gone straight up to Jahangir Lone. He's given him a gift. And in this part of the world, he can see spectators thronging the ground and invading the pitch and giving their gifts to their beloved players. That is Jahangir Lone's outstanding innings. Look at that shot. Outside the off stump. Stand and deliver. Thank you very much. Deposited over wideish long off. That is brilliant batting from Jahangir. 65. Here is Ishfaq Bresnan to Jahangir Lone. He goes across the line. He will pick up a single only this time. Moves to 66. And the total 149 for 6 in the 19th over. This over has gone for plenty. 2 sixes of the first 2 balls. 13 runs coming of the 3 balls have been bowled so far. This is brilliant batting from Jahangir Lone, and Zohar Zolo is giving him able company at the other end. Zohar Zolo is on strike now. Here is Ishfaq Bresnan to Zohar, shot outside the off stump. The batsman was trying to go up and over, and he was asking for a wide. The umpire has signalled 1 shot for the over. That was short outside the off stump. Gaining a bit of height on that occasion was Ishfaq Bresnan, because he has been taken to cleaners in this over. He's bowled well. 24 for 1, 33.4 overs. This partnership has done wonders for Sultan Warriors Baramulla. 149 for 6. The 5th ball of the 19th over coming up. Ishfaq Bresnan up to the stumps. Bowls to Zohar. He gets a top edge. That's gone up over the cordon. That is running away to the boundary. A third man for 4. Runs. Runs and runs. No matter how they come, as long as they come. Outside the off stump, he was trying to go mid-wicket. He gets a top edge, a healthy top edge, an educated top edge, yields him another boundary. 153, 150 comes up for Sultan Warriors Baramulla in the 19th over. The final ball of the 19th over coming up. Blitzkrieg, a belligerent innings from Jahangir Lone. Zohar Zolo says, why should I lag behind? He goes up, he goes over. That one has been crashed away to the extra cover boundary for 4. 4 to end the over. What has gone wrong with Ishfaq Bresnan in this over? He was brilliant till his 4th. He's given away 2 sixes, 2 boundaries. He's given away 21 runs in this over. कुछ बड़े नाम भी आनंद ले रहे हैं लाइव कवरेज का। उसमें जावेद जड़ूपी हैं, एक बड़ा नाम वादी कश्मीर का, और फ्यूचर स्टार हम उसे कहते हैं, और वो हिस्सा है लाइव कवरेज का। आप शेयर कर सकते हो लाइव कवरेज को। यहाँ 19 ओवरों का खेल हुआ है। 157 टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। जोहर जोलो 17 गेंदों का सामना किया, और जहांगीर लोन ने 28 गेंदों का सामना किया। इशफाक ब्रेस्नन 4 ओवर की गेंदबाजी, उन्होंने 1 विकेट हासिल की, 32 रन खर्च किए। ये काफ़ी खर्चीला ओवर गया। इससे पहले जो उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की, काफ़ी कंजूस गेंदबाजी, ज़्यादा खर्चीले तो नहीं हुए वो ओवर, ज़्यादा रन तो खर्च नहीं किए हैं। पर यहाँ जो परीक्षा थी, यहाँ जो इम्तिहान था, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हम उन्हें हमेशा कहते हैं, पर यहाँ आज उनका जो बॉलिंग क्रम है तहस नहस हुआ आखिरी ओवर में, और ओवर समाप्त जो हुआ उनका 4 ओवर 32 रन, 1 सफलता। आखिरी ओवर पारी का शुरू होने को है। अजगर वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंडरगाम में जो हमेशा हर साल होता है रहमान कप, वहाँ मैंने उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा। तब उनके पास अच्छी खासी स्विंग हुआ करती थी। आज काफ़ी अरसे के बाद उन्हें देख रहा हूँ स्ट्रोक खेलने की कोशिश, चूके और गेंद शायद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई। कॉट बिहाइंड हुए हैं, मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। जोहर जोलो शाबाशी दे रहे हैं, और
ये अवसर काफी कम देखने को मिलते हैं, जब आउट होने पर भी शाबाशी दी जा रही है बल्लेबाज को। ये दर्शा रहा है किस तरह की पारी खेली है जहांगीर लोन ने। मुर्दे में जान फूंकने के लिए ये पारी तो काफी थी। Outstanding innings comes to an end. Jahangir Lone is not looking happy, but look at the standing ovation he's getting from all the spectators and from his teammates in particular. Look at Jahangir Lone getting a standing ovation. That has been one heck of an innings from Jahangir Lone. The next batsman to come out in the middle is Azim Rathar. Strike rate of 161.96. It's 157 for 7. Asghar finally coming up and picking up the prize scalp of Jahangir Lone. He was trying to go mid-wicket once again, outside edge, and wicketkeeper Talha Ashraf makes no mistake. Asghar has picked up 25 for 2, and he's bowled well as well, keeping that ball outside the off stump and keeping that ball on a length, because Jahangir Lone always looking for that mid-wicket, square leg and cow corner area. That is outstanding stuff from Asghar, picking up an important wicket for his side. New man in is straight away on strike. Azim Rathar, 157 for the loss of 7 wickets. Two for 25, 5 more balls to come in the 20th over. There is a cover inside the ring. Parvez Rasool is fielding there. Extra cover, beg your pardon. There is a mid-off, mid-on. Mid-off is inside the circle. Long on is on the boundary. Here is Asghar to Azim Rathar. He leaves it well alone outside the off stump. Zoor Zolo was trying to go for a run. He will be run out. And Sultan Warriors Baramulla have lost Zoor Zolo. He has to walk back. Azim Rathar didn't give a damn to Zoor Zolo's call. Did not move at all. He was not even looking towards Zoor Zolo, and Zoor Zolo kept running, and he is gone. Wicket number 8 for Bijbehara Sports Club, and 157 is on the board. आजम रहतर उनका खाता खुलना बाकी, एक गेंद का सामना किया, 157 टीम का स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है, 4 गेंदें बची हुई है। एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में टीम तो सफल जरूर रही है। और यहाँ गेंदबाज असगर गेंदबाजी करने की तैयारी में, 4 गेंदें बची हुई हैं इस पारी की। टॉस जीतकर बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान परवेज रसूल ने यहाँ ये फैसला लिया कि पहले वो फील्ड करेंगे, और फील्ड करने का वो फैसला सही साबित हुआ था। सुल्तान के जो बल्लेबाज शुरुआती बल्लेबाज थे, उन्होंने तोहफे के रूप में अपनी विकेटें गंवाई, और उस कारण एक के बाद जो एक झटका लगा, सुल्तान की टीम बैकफुट पर नजर आई। ज़हूर ज़ोलो 8 झटके अब तक लगे हैं, और नए आए बल्लेबाज आज़म रथर वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। अब डगआउट से नए और बल्लेबाज जा रहे हैं। प्रदीप वो जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, जबकि आज़म रथर बाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी है, थोड़ा सा वाइड इशू उन्हें तैनात किया गया। बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर, पॉइंट बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी है। कवर में है परवेज रसूल, लॉन्ग ऑफ लगाया गया है, और ऑन साइड में देखा जाए लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, और शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर 5-4 की फील्ड के साथ असगर चले राउंड द स्टंप, गेंद को खेला, गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी तैनात, पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। और इस बार असगर का बल्ला चला, क्या शानदार स्ट्रोक डीप पॉइंट के ऊपर से आज़िम रथर का बल्ला। और अगर हम WPL की बात करेंगे, वहाँ भी कुछ बड़े स्ट्रोक इसके बल्ले से देखने को मिले, अनुभवी बल्लेबाज से। और इस बार गेंद को खेला, गेंद बाउंड्री पार 6 रनों के लिए, जिस छक्के की आवश्यकता थी वो दिलाती हुई या इस बल्लेबाज की ओर से। फिलहाल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे फिर से बायात के बल्लेबाज, चाहेंगे इन 3 गेंदों पर और कुछ रन हासिल करे, तब जाकर एक बेहतर स्थिति बन सकती है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। फिलहाल सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज चले, असगर ओवर द स्टंप्स, दायात के बल्लेबाज के लिए फिर से गेंद को खेला, भले के ऊपरी भाग से लगने के बाद पीछे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं, और एक आसान सा कैच लपक लिया। इसी के साथ मैदान से वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं बाएं हाथ के ये बल्लेबाज। 163 8 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदें हुई हैं, हालांकि 9 झटके लगे हैं, 4 गेंदें हुई हैं, अभी 2 गेंदें शेष। अगर 2 गेंदों पर 6-7 रन आएंगे तो 170 तक टीम जा सकती है, जो परिस्थितियां थी, जो स्थिति थी इस मुकाबले की, और वहां से 170 तक पहुंचना, ये कमाल की बात है इरशाद भाई। Absolutely.
It's probably due to Jahangir Lone's innings that Sultan Warriors Baramulla are finding themselves in some sort of respectability at the moment. They're 163 for 9. 19.4 overs have been bowled, and Asghar has picked up 3 for 31. Along with Parvez Rasool, he has been the most successful bowler from Bijbehara Sports Club. Azim Rathar hit a 6-over point. It's not an easy shot to play. And the next ball, he was trying to go the same area, same direction. He got an outside edge that was cobbled by the fielder coming from deep third man boundary. So it's going to be the final pair out there. Owais Baba is going out in the middle, and Owais Baba will be on strike. 163 for 9. There is a message for you: say no to drugs, because drugs are killing our young generation. Drugs are leading to a havoc. Drugs, they are a menace. We need to get rid of this menace as quickly as possible. This is the message from Bijbehara Sports Field on behalf of Bijbehara Cricket Association and on behalf of State Sports Live. Here is Asghar to bowl to Owais Baba. Owais Baba takes his eyes off the ball. Somehow he manages to get a tickle onto that and ran through for a single. That's leg byes signalled by the umpire, and he gets Pradeep Prasar on strike. 164 for 9. Look at that, closing the bat face. He was trying to nudge it away to the onside, closing his eyes at the moment, closing his eyes for a moment as well, and nonetheless he picks up a single, and he brings Pradeep, who is a better striker of the ball, on strike. He's a left-hander. Here is Asghar for the final time in this innings to bowl to Pradeep. Pradeep has stonked it over mid-wicket, and that's gone all the way into the crowd. 6 to finish the innings. 170 for 9 is what Sultan Warriors Baramulla have got after being reduced to 82 for 6 at one stage. One more ball to come in this over. 170 for the loss of 9. Here is Asghar to bowl to Pradeep, and Pradeep once again has swung it into the gap, but this time the fielder from long on moves to his left, picks the ball up. 2 to finish the innings. It's 172 for 9. 173 is going to be 170. We are just checking the scorecard once more. 165 for 9 till the 19.5 overs. So 171 for 9 after 20. 172 is going to be the target for Bijbehara Sports Club in order to win the 4th match of Bijbehara Premier League. The toss was won by Bijbehara Sports Club captain Parvez Rasool, and he invited the opponents to come and have a bat first. They batted first. They were struggling in around the 11th over, but then Jahangir Lone and Zohar Zolo had other ideas. 172 for the loss of 9 wickets is what Sultan Warriors Baramulla achieved in their 20. An update has been given by the scorer. 173 is going to be the revised target after we checked the scorecard, and 173 the target for Bijbehara Sports Club in this match. The partnership between Jahangir Lone and Zohar Zolo was instrumental in taking this score to some sort of a respectability. 172. Sultan Warriors Baramulla and Bijbehara Sports Club. Jahangir Lone top scored with 66, and he was given able spot at the other end by Zohar Zolo. So in the innings break, it's 172 for the loss of 9 wickets. That's the news that we have from here. 173 after the innings break. When Bijbehara Sports Club will come and chase this, we'll be back
with the live proceedings. Match summary so far. Jahangir Lone 66 of 29, Imtiaz Lefty 20 of 17. Parvez Rasool, Mohammad Umar 18 of 13. Parvez Rasool picking up 3 for 20 and Asghar picked up 3 for 27. It was 172 for the loss of 9 wickets after the completion of 20 overs. 173 when Bijbehara Sports Club comes to chase this. We'll be back with the live action. Live action after the break coming your way. Stay tuned.
Shiva Singh. He goes high, he goes handsome, and he has gone for 6. That has gone over. Long leg. That's an outstanding shot. Shiva Singh. He can lead this crowd. That is brilliant hands. Inside the line, flick of the wrists. And away she goes over. Deep long leg and into the crowd. Using the pace of the bowler, OS Baba. 7 without loss. 2 balls gone in the first over. They're chasing 173. Wicketkeeper standing well back. Lone slip in position. Backward point, straightish point, and a catching cover. Here is OS Baba to Shiva Singh. And Shiva Singh goes hard. Over extra cover this time. And all the way. 6 more back-to-back 6s. Shiva Singh is on a counter-attack. He's wheeling his willow at the moment. 2 back-to-back 6s. One was over long leg and the other was an exquisite extra cover drive, and it went all the way for a huge one. 13 without loss in over number 1. Shiva Singh, he can play some blinders. He is a player to watch out for. He's walking towards his dugout, I think. Probably he's asking for a change in his bat. "13 without loss. 3 balls have been bowled, and he has come out with an intent. He has to take this bowling on. It's exactly what he's doing at the moment. A change of bat for Shiva Singh. OS Baba is feeling the heat at the moment. Crowd in numbers here at Bijbehara Sports Field. 173 is required from the 20 overs. You can log on to the official Facebook page and YouTube channel. Without loss. 3 balls have been bowled so far. Shiva Singh 12 runs with the help of 2 6s. Slight change in the field. Mid on inside the circle at a straightish position. Extra cover in place. Here is OS Baba from the school end to Shiva Singh, and Shiva Singh pulls this time through mid-wicket. No need to run for those. That's 4 more. 6, 6 and 4. 4 balls, 17 runs given away by OS Baba. He's under some pump. 17 रन अब तक खर्च किए हैं ओएस बाबा ने। अपना वो पहला ओवर कर रहे हैं अहमद भांडे और शिवा सिंह, 2 बड़े नाम बीजबेहाड़ा सपोर्ट्स क्लब की तरफ से यहाँ इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए हैं। और 174 चाहिए जीतने के लिए। कोई छोटा लक्ष्य तो है ही नहीं, पर जो परिस्थितियाँ यहाँ हैं, हर मैदान के हर कोने की वाकफियत है परवेज रसूल को। बीजबेहाड़ा सपोर्ट्स क्लब का जो खेमा काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गई है। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया है। भले कि अंदरूनी हिस्से से गेंद लगी है, किस्मत वाले रहे, स्टंप की ओर नहीं गई। और 17 से बढ़कर 18 हुआ टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। बीजबेहाड़ा प्रीमियर लीग एक बड़ा मुकाबला। हालांकि जो टॉस जीता था, यहाँ फैसला किया था कि पहले फील्ड करेगी टीम बीजबेहाड़ा स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान आकिब मीर ने, और वो फैसला सही साबित हुआ ज़रूर। और यहाँ उन्होंने शुरुआत में ही झटके दिया। इस बार स्ट्रोक टेनिस शैली का, गेंद सीधे गई है मिड ऑफ की तरफ। उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। पहला ओवर समाप्त। 18 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बीजबेहाड़ा स्पोर्ट्स क्लब को 174 चाहिए जीतने के लिए। शिवा सिंह का स्कोर 17, 4 गेंदों का सामना किया। अहमद बांडे ने 1-2 गेंदों का सामना किया। और यहाँ से जो टीम जीत कर जाएगी और यकीनन बुलंद हौसले के साथ वो अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। और बीजबेहाड़ा स्पोर्ट्स क्लब का आज लंच के बाद भी यहाँ मुकाबला होने जा रहा है।
जबकि सुल्तान की टीम कहीं और चली जाएगी खेलने के लिए। 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी की जिक्र करूँ मैं, हाल ही में एक विवाद हुआ था और मैं कुछ बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करूँगा इरशाद भाई आपके साथ। जो डायमेंशंस होनी चाहिए बल्ले की, और हम हमेशा कहते हैं लगभग 95-96 सेंटीमीटर्स के आसपास जो लेंथ होती है बल्ले की, आप जो इंटरनेशनल साइज़ होता है आप उससे आगे उससे ज़्यादा लंबा आप नहीं रख सकते हो। और ऑन फील्ड जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका भी ये काम रहता है कि बारीकी से देखना, जांचना कि कहीं कोई कोताही ना हो। और गेंद को लेकर अगर मैं बात करूं, आमतौर पे जो 3 किस्मों की गेंदें होती हैं, आप एसजी की जिक्र करोगे, आप डूक गेंद की बात करोगे, आप यहाँ कोकोबोरा की जिक्र करोगे जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा बनाई जाती हैं, जबकि डूक का क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है। और मेरठ में जो 1957 के आसपास एक जो कंपनी स्थापित की गई और वहाँ एसजी मैन्युफैक्चर हो रही है। और भारत की जिक्र करूं तो वहाँ एसजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हो सकता है एक वजह ये भी हो क्योंकि वाइड रिसीव ज़्यादा होती है और स्पिनर्स की ग्रिप ज़्यादा बेहतर होती है और जो प्लेइंग कंडीशन है वो स्पिनर्स के लिए कारगर होती है। और ये कारण है जब कोई दौरा कर रही है टीम, कोई विपक्षी टीम आती है बाहर दौरा करने के लिए, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंग्लैंड में आप डूक खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अफ्रीका में आप कोकोबोरा का इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिया में आके आपको एसजी के साथ जंग लड़नी पड़ती है। क्या ये भी एक वजह है कि यहाँ पे फिर टेस्ट मैच जीत कर जाना ये उनके लिए मुश्किल हमेशा होता है? Might be a reason. We're talking about that checking of bats by the umpires nowadays and the balls as well. They should check both, and a proper gauge is being used by the umpires to check the width and the dimensions of the bat. And the initiative in this part of the valley has been taken by umpire Javed Daryal in JKPL that's going on at the moment. And these decisions, these initiatives might be encouraged because they are good for the game. And the youngsters who are learning on a level that's good for them as well. Meanwhile, a next over has been started by Imtiaz. He's bowling left arm seam from the market end. On strike is right-handed Ahmed Bande. I beg your pardon, Shiva Singh. Ahmed Bande is at the non-strikers end. Shiva is batting on 17 of 7. As here is Imtiaz. Left arm over to Shiva Singh. Shiva Singh works this one. Pass square leg. Fielder from deep comes in, picks the ball up. Single to Shiva Singh. He moves to 18 of 7. Ahmed Bande is batting on 1 of 2. 173 needed from the required 120 balls. Should not be difficult for Bijbehara Sports Club because this is their own ground and they are playing in their own yard. A lot of knowledge about this ground as here is Imtiaz once more. This time to Ahmed Bande. Ahmed Bande is solid behind the line. Ahmed Bande, one of the premier openers of JNK, representing Jammu Kashmir Cricket Association, and he's played county cricket as well, so he might be carrying that experience, and he's the only player along with Parvez Rasool and some few players who don't play on matting wickets at all. The next ball, this one, it's gone fine with that. He was trying to go for a run. Shiva Singh negates, and this time the overthrow is coming. They're coming back for the second. There was no run in it because he was trying to just nudge it fine towards short fine leg where there was a fielder, Oas Baba. He threw at the striker's end because Ahmed Bande was backing too far, but Shiva Singh had sent him back, and in the meantime the batsmen helped themselves with the help of 2 runs. 2 overthrows have taken the total to 21 without loss after the completion of 2 overs. 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और इस ओवर में 3 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने, जबकि पहला ओवर जो गया उसमें 18 आए हैं और अहमद बांडे 3-4 गेंदों का सामना किया, शिवा सिंह ने 18-8 गेंदों का सामना किया और इम्तियाज लेफ्टी, और उनका जो पहला ओवर गया उसमें उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए हैं। प्रदीप वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदीप गेंदबाजी करने की तैयारी में। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, उन्होंने 173 बनाए, 174 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। बटिश
खुर्शीद भी हिस्सा है लाइव कवरेज का। शिवा सिंह बने हुए हैं अहमद बांडे के साथ, क्रीज पर मौजूद हैं। 18-8 गेंदों का सामना किया और यहाँ गेंदबाज प्रदीप वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द स्टंप्स, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर को चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम चाहेगी रन आने चाहिए, जिस तरह भी आए। बल्ले की बाहरी हिस्से से गेंद लगी है और स्लिप कॉर्नर के ऊपर से वहां तैनात खिलाड़ी नदीम डार हवा में झूलते हुए इस प्रयास में उन्होंने जरूर ये हालांकि कोशिश की थी कि गेंद को कैच किया जाए, पर सफल नहीं रहे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। 25 रन 2.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं प्रदीप। बाएं हाथ के गेंदबाज स्टंप और अंपायर के दरमियान से उन्होंने दौड़ना शुरू किया। डायगोनल रनअप है और वो राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। अगली बार इस बार ऑप्शन से जरा सी बाहर थी और बैट और पैड साथ मिलाकर सम्मान दिया। धकेला गेंद को सीधी गई पॉइंट की तरफ। दायरे के अंदर लगभग 25-26 गज के फासले पर गेंद को फील्ड किया गया। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, अभी भी 25 रन टीम का स्कोर। 174 चाहिए जीतने के लिए। अगली गेंद को खेला लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी उन्हें इससे पहले ऊपर कर दिया गया, वो दायरे के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप आज़ादी नहीं दे सकते हो बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने की, और यहाँ जो आज़ादी मिली बल्लेबाज बख्शने वाले कहाँ होंगे। और शिवा सिंह के खाते में 4 और रन का इजाफा। उनका निजी स्कोर 26। 11 गेंदों का सामना किया। चौथी गेंद करने के लिए तैयार। शिवा को कदमों का इस्तेमाल पूरी तरह से चूके और यहाँ विकेट हासिल की है आखिरकार प्रदीप ने, और शिवा सिंह मैदान छोड़कर वापस चले गए। 1 shot too many. This time the outside edge was beaten. The wicketkeeper was up to the mark and Pradeep Prasar has struck gold in his first over. Shiva Singh is going back. He entertained the crowd with some blazing stroke play. Immediately after hitting that 6, he was trying to repeat it, but the ball was bowled outside the off stump at an angle, slanting across the right hander, and he was, beg your pardon, that one kept straight. He was trying to fuse his feet, come down at it. He was trying to launch it over mid wicket. The ball went past the bat and the wicketkeeper does the rest. 29 for 1, Bijbehara Sports Club chasing 173. They are in the 3rd over, and to replace Shiva Singh, out comes the wicketkeeper batsman Talha Ashraf, one of the promising youngsters. Talha Ashraf in that Seed Hamdan Premier League scored a brisk 56 the other day, and he's come out to bat at number 3. When you're sharing your dressing room with the likes of Parvez Rasool, Shiva Singh and others, you're getting that extra bit of zing, that extra bit of courage and that extra bit of confidence to go into the match. And this is Talha Ashraf for you, a promising youngster, and he is there to come and bat at number 3 when there is Parvez Rasool in the rankings. He's come out to bat at number 3. This is selflessness at its best from Parvez Rasool, because he always bats at number 3 in these conditions. और बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ अब जो बल्लेबाज आए हैं अहमद बांडे, वो अभी भी नाबाद 3 के स्कोर पे 4 गेंदों का सामना किया। तलहा को तलब किया गया, इस पारी को सहारा देने की कोशिश में लगे रहेंगे। इस बार राउंड स्टंप्स अंदर की ओर आती हुई गेंद, फिर से गेंद को धकेला और उस ओर जोहर जोलो मौजूद, बैकवर्ड पॉइंट से आए वो फील्ड करने के लिए। कोई रन नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है। बिजबेहारा प्रीमियर लीग का ये जो बड़ा मुकाबला है, जहां टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया सुल्तान वॉरियर्स के खिलाफ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान परवेज रसूल ने, और वो फैसला सही साबित हुआ। टीम को रोकने में वो सफल रही, पर आखिरी जो 4-5 ओवर्स बचे हुए थे, जब जहांगीर लोन का बल्ला चमका, आग उगलता हुआ नजर आया और वहां से एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ और टीम 173 बनाने में सफल रही। 174 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए, और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बीच मैदान पर उतरी है बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब की टीम। 3 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि कुल मिलाकर जो अभी भी करंट रन औसत 9.67 की और दरकार औसत वो 8 से ज़रा ज़्यादा होगी ज़रूर। नीड 145 चाहिए, हालांकि 8.53 की औसत से अब रन चाहिए जीतने के लिए। अहमद बांडे 3-4 गेंदों का सामना किया और इम्तियाज़ लेफ्टी, पहला ओवर काफ़ी अच्छा गया, विकेट तो नहीं मिली, अब वो अपना दूसरा ओवर करने के लिए तैयार। ओवर द स्टंप्स दाएं हाथ के बल्लेबाज अहमद के लिए, गेंद को धकेला अहमद बांडे ने, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है,
जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए। 1 रन खाते में इस 1 रन की सहायता से अब 30 हुआ टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 3.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। Crowd in numbers here at Bijbehara Sports Field as Imtiaz left arm over ball, and this time played beautifully but not for runs. Talha Ashraf leaning into the drive. Not for runs. Talha Ashraf is on strike, yet to get off the mark. 3 balls faced so far, 30 for 1. Here is Imtiaz once more to Talha. Talha, square drives. That's a gorgeous shot. No need to run for that. Using the pace, angle it bat down to the wideish third man boundary, and that's 4 more. Using the bowler's pace on that occasion and guiding it beautifully past backward a point down to the third man boundary. That boundary might give some confidence to Talha Ashraf. 34 for 1. There is something wrong with the side screen there, probably. There are some spectators moving. Here is Imtiaz lefty once more, and this time he gets it, nudges it in front of square on the onside. Picks up one more, moves to 5. The total moves up to 35 for 1. We are in over number 4 of the innings of Bijbehara Sports Club. They need 173 for a win. Ahmed Bande is on strike now. Here is Imtiaz to Ahmed Bande in the air, but over the fielder at mid-on. He'll get a single. This was the exact scenario when he was dismissed in the opening match of JKPL at the University of Kashmir cricket ground. He was trying to check drive, and once again he was trying to drive, and then he checked his stroke and almost spooning a catch to the fielder fielding at straightish mid-on. This time Talha comes forward, opening the bat face, guiding it straight to point. There is no run. That marks the end of over number 4. It's 36 for 1. Bijbehara Sports Club chasing 173 for a win. 36 रन टीम का स्कोर कुल मिलाकर देखा जाए एक सफलता अर्जित की गई है शिवा सिंह की, जो उन्होंने 11 गेंदों पर 26 रन बनाए हैं। और अभी भी 2 बल्लेबाज नाबाद, अहमद बांडे और तलहा। और जब हम पहली दफ़ा यहाँ आए थे लाइव करने के लिए, तब तलहा इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए थे। और बिजबेहारा प्रीमियर लीग जहाँ रवां दवा है, ये तीसरा एडिशन आप शेयर कर सकते हो लाइव कवरेज को। कोई छोटा लक्ष्य तो नहीं है, एक ऐसा लक्ष्य चेज करने के लिए जिस पे एक चुनौती खड़ी कर सकती है टीम, विपक्षी टीम के लिए। और टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला सही साबित हुआ था। शुरुआत में कुछ झटके लगे थे सुल्तान को, और बाद में जहांगीर लोन का जो बल्ला चमका, और उसके बाद टीम ने 173 तक पहुंचने में एक रसाई जो हासिल की, उस लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब। 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 5वां ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद प्रदीप गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने पहले ओवर में सफलता हासिल की, 8 रन खर्च किए हैं। आप बिजबेहारा प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पेज पे लाइव कवरेज का आनंद ले सकते हो। ऑप्शन की सीध में फिर से गेंद को धकेला, गेंद सीधे गई है कवर की तरफ जब तक इनको फील्ड किया जाए। 1 रन और टीम के खाते में इस 1 रन की सहायता से अहमद बांडे, वो अभी हालांकि रन तो नहीं मिला है, 5 के स्कोर पे हैं अहमद बांडे। वो सामना करेंगे प्रदीप की अगली गेंद का। इस बार खतरनाक ढंग से गेंद ऊपर की ओर चली आई और खुद को बचाने चक्कर में गेंद शायद हेल्थ के साथ जाके टकराई। कोई रन नहीं। अब उस स्पॉट को दबाने जा रहे हैं अहमद बांडे, जहां से एक अतिरिक्त उछाल मिला। अनइवन बाउंस इस बार गेंद में देखने को मिला। और प्रदीप वो इस ओवर में अगली बार सामने है अहमद बांडे, दाएं हाथ के बल्लेबाज। वो सामना करने के लिए तैयार, बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रोक को चेक किया, ऑन साइड में धकेला, गेंदबाज चले गए शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की ओर गेंद को फील्ड करने के लिए। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन खाते में। इस 1 रन की सहायता से 37 हुआ टीम का स्कोर, और अभी भी जीतने के लिए 137 चाहिए, जबकि 15.3 ओवरों का खेल आना बाकी है। और यहाँ 174 का लक्ष्य मिला है कुल मिलाकर बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को चेज करने के लिए। परवेज रसूल का अभी आना बाकी है, उस पर काफ़ी जिम्मेदारी होगी। आकिब मीर इस टीम लाइनअप में रहेंगे।
फिर से ये गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से गेंद चली गई ऑन साइड में। उस ओर खिलाड़ी तैनात, विकेट कीपर चले गए फील्ड करने के लिए। इनको फील्ड करके थ्रो किया, गेंद स्टंप पर नहीं आई। डॉट गेंद के साथ यहाँ इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज प्रदीप। Pradeep Prasar, left arm spinner between the umpire and the stumps, has bowled well. And he's bowling lovely lines and lengths, slowing the pace of the ball. Once again played behind square on the onside. Protection at short fine leg, cannot be any runs. Score stays at 37 for 1. We are in the 5th over of the innings. So Bijbehara Sports Club, they require 173 for a win. Next ball. Time waits for the ball, uses the pace. He's batting brilliantly, but he is hitting the fielders at the moment. A dot ball to finish the 5th. It's 37 for 1. They need 137 from the remaining 90 balls, with 9 wickets in the shed. Pradeep Prasar so far has bowled 2 overs, 1 for 8. Ahmed Bande is batting on 5 of 9, taking some time, and Talha is batting on 5 of 9 as well. 37 for the loss of 1 wicket. At this stage, Sultan Warriors Baramulla were 34 for 2. They had lost 2 wickets, 2 back-to-back wickets. And it's going to be Imtiaz to bowl from the market end once again. On strike is the right-handed batsman, Ahmed Bande. Ahmed is batting on 5 of 9. Wicketkeeper is up to the stumps. There is a straightish mid-on, catching extra cover. There is a point, a backward point, and a gully. Here is Imtiaz. This time, that's a gorgeous shot. No need to run for that. That is sumptuous from the bat of Ahmed Bande. On the pads, leans into it, closes his bat face, and away it goes, whistling away to the cow corner boundary for 4. Lovely shot. 9 not out, and the total 41 for 1. Imtiaz has to be careful. Imtiaz to Ahmed Bande. Ahmed Bande tucks it behind square. That's a fine shot. That's 4 more. 1 through mid-on. Another past the square leg umpire into the boundary at backward point, at deep backward square leg. Back-to-back boundaries gets Ahmed Bande going. He moves to 13 into the double figures. Bijbehara Sports Club have moved up to 45 for 1. Imtiaz. Ahmed Bande waits for the ball, uses the pace. The fielder was fairly deep on the edge of the circle at short third man, and he rushes through for 1 more. This is smart batting. 2 boundaries. Immediately he takes the strike, brings the youngster back on strike. एक अच्छी रणनीति, 2 चौके लगे इस ओवर में और अगली गेंद पर सिंगल लेकर सिरा बदला है। अब तलहा, इस टीम का युवा चेहरा, वो सामना करने के लिए तैयार। पैड लाइन पे कलाइयों को मोड़ते हुए स्ट्रोक लिया, गेंद स्क्वायर की तरफ गई है जरूर। उस ओर खिलाड़ी तैनात ज़हूर जोलो गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने से नहीं रोक सके तलहा और अहमद बांडे को। इस 1 रन की सहायता से तलहा अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 10 रन अब तक आए हैं इस ओवर में। 20 वाट इम्तियाज़ लेफ्टी ने अब तक 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन खर्च किए हैं। 10 रन इस ओवर में, 5वीं गेंद करने के लिए तैयार अहमद बांडे। क्या बड़ा स्ट्रोक खेलने का इरादा करेंगे या नहीं? गेंद को डिफ्लेक्ट किया, क्या शानदार, हालांकि टाइमिंग गजब की थी पर प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं, और फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई है इम्तियाज़ लेफ्टी के हाथों। लेफ्टी इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है और आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की, और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस ओवर में। अगली बार इस बार फिर से गेंद लेग स्टंप छोड़ती हुई गई, हालांकि अपील तो कर रहे हैं वसीम काशरू। वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर की तरफ से। अत्रिक के खाते में 1 रन, टीम के खाते में 1 रन का और इजाफा, और अहमद बांडे वो अभी भी नाबाद हैं। तलहा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है, और वाइड का इशारा अत्रिक के खाते में ये 1 रन आएगा ज़रूर। बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब 174 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। इस ओवर में 11 रन खर्च किए हैं, 5 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। लेफ्टी अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं इम्तियाज़ लेफ्टी। आमतौर पे आपने देखा होगा इरशाद भाई, जहाँ कहीं मुकाबला होता है तो शुरुआत में सफलता दिलाना ये जिम्मा होता है इम्तियाज़ लेफ्टी का, काम होता है। पर यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं, जो विकेट है,
वो शायद रास नहीं आई इम्तियाज़ लेफ्टी को, क्योंकि बैटिंग पे उनका दबदबा रहता है। रियल क्रिकेट आज रियल टेस्ट है टीम सुल्तान वॉरियर्स का। और इम्तियाज़ लेफ्टी सामने है, अहमद बांडे दाएं हाथ के बल्लेबाज, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, लगभग 5 फीट 9 इंच के खिलाड़ी। इस बार कदमों का इस्तेमाल पूरी तरह से चूके और वसीम काशरू टूट पड़े। उन्होंने गेंद को अपने दस्तानों में लिया, स्टंप बिखेर दिए और अहमद बांडे को वापस जाना होगा। दूसरा झटका लगता हुआ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के खिलाफ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को, और सुल्तान वॉरियर्स का हौसला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डगआउट से वादी कश्मीर का पूरे जेएंडके की अगर मैं कहूं शान तो भेजा नहीं होगा। परवेज रसूल नमोदार हुए हैं और वो मैदान की ओर जा रहे हैं। Here to those chants. Here to those supportive chants, and that's for Parvez Rasool. He's striding out into the middle because Ahmed Bande has been stumped off the bowling of Imtiaz lefty. Playing one shot too many. Ahmed Bande is going back to the hut. It's 48 for 2. 126 runs needed from 84. And Imtiaz is the man who's picked up a wicket. The 2 wickets to fall so far. Pradeep Prasar got the first one. Shiva Singh was stumped, and then the next one was stumped also of a seamer. It's going to be Pradeep Prasar to bowl from the school end. On strike is Talha Ashraf. Parvez Rasool, he has groomed these youngsters to a level where they can come and play alongside him. Plenty of players from this area have represented J&K in different categories under different age groups. That is achievement for you from the international megastar Parvez Rasool. Play hold up for a moment. Sultan Warriors Baramulla taking their time. And for a moment it looked like Pradeep Prasar, but he has been taken off. It's going to be Azim Rathar to bowl. Azim Rathar, he will bowl left arm spin once more. He's a quality left arm spin bowler. And Jahangir Lone is marshalling his troops. He's going at a position of mid on inside the circle. और आज़म रहतर के पास अनुभव की कमी नहीं है, पर जब से वो सुल्तान के खेमे में आए इरशाद भाई, वो बदले हुए गेंदबाज नजर आए। आज आज़म के लिए भी एक परीक्षा है कि परवेज रसूल पर कोई प्रभाव छोड़ने में सफल हो जाएंगे या नहीं। आज़म रहतर बाएं हाथी गेंदबाज, राउंड द स्टंप्स वो गेंदबाजी कर रहे हैं और ऑफ स्टंप की सीध में स्टंप्स को कवर किया, वापस धकेला बल्लेबाज तलहा ने। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, अभी भी 6 टीम का स्कोर 11 गेंदों का सामना किया और 48 से 2 विकेटों के नुकसान। और जिसकी हम बात कर रहे थे उस तरह की गेंदबाजी इस समय आज़िम रथर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। पूरी तरह से वहाँ विकेटों के पीछे बैठे हुए विकेट कीपर वसीम काशरू हिलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी पिछले ओवर में अहमद बांडे को वापस भेज दिया और काफ़ी नज़दीक रहे वो फास्ट गेंदबाज को। आसान नहीं रहता है, तब जाकर वसीम काशरू का नाम रहता है हमेशा एक ऊपरी लेवल पर। अगर हम वसीम काशरू की बात करेंगे, फिलहाल इस ओवर में अगली मरतबा सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज तलहा वो सामना करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को खेला, इस और खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। लगातार एक अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए आज़िम रथर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। फिर से एक बार सामना करने के लिए तलहा तैयार हो रहे। इस बार अगली मरतबा फिर से सीधे बल्ले से खेला गया सुप्रोक, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा लगान से आए हुए खिलाड़ी जहांगीर लोन ने, तब तक आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने एंड चेंज के 1 रन का इजाफा या टीम के स्कोर में देखने को मिला। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 49 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 6.4 ओवर की अब तक समाप्ति हो चुकी। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे। फिर से उनका सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज रसूल, वो सामना करने की तैयारी में। आज़िम चले, इस बार गेंद को खेला डीप पॉइंट की ओर से, उस और खिलाड़ी तो थे, कहते हैं ना हिले मत, गेंद बाउंड्री लाइन से पार 4 रनों के लिए चली गई। क्लास बड़ा स्ट्रोक था ये परवेज रसूल के बल्ले से। ये जो स्ट्रोक था देखने लायक था, वो जो हम हमेशा कहते हैं सोनार किशोर लोहार के एक बिल्कुल उसी शैली का स्ट्रोक था। अब तक हमने तो
बहुत सारे स्ट्रोक देखे, पर ये जो स्ट्रोक था एक शानदार स्ट्रोक। खिलाड़ी तैनात तो ज़रूर थे पर हिलने का मौका नहीं मिला। ये दर्शा रहा है कि किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं परवेज़ रसूल। अगर वो विकेट पर रहे तो ये अच्छा संकेत नहीं होगा टीम सुल्तान वॉरियर्स के लिए। अजमरत है इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। परवेज़ रसूल का स्कोर 4-1 गेंद का उन्होंने सामना किया। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। क्या दिलकश और गजब का स्ट्रोक। यहाँ मौजूद दर्शकों की एक बड़ी तादाद उन्होंने आनंद लिया इस स्ट्रोक का और तालियों के साथ स्वागत किया परवेज़ रसूल के इस शानदार स्ट्रोक का। That is class personified. Parvez Rasool rocking back up onto the back foot and picking up bones out of that and smashing it in front of square to the deep mid-wicket boundary to end that over. 4 more and Parvez Rasool is playing a gem so far. 8 runs with the help of 2 boundaries. It almost went all the way over mid-wicket. Parvez Rasool, the first shot was past the point region, using the depth of his crease, picking the length early and playing it up and over to the deep mid-wicket boundary to finish the 7th over. It's 57 for 2. 117 from 78 remaining deliveries. Pradeep Prasar is having a word with Parvez Rasool. They know Parvez Rasool very closely. They've got a close intimidation. They have got a close eye on Parvez Rasool because he was number 1 all-rounder for many seasons of Ranji Trophy, and he got that prestigious award from BCCI many a time. Parvez Rasool, he's got a reputation outside the JNK, in JNK as well. He's played cricket for the state, he's played cricket for India, he's played cricket for RCB, for Sunrisers Hyderabad, and he's played in BPL. That is class! That is superb from Talha Ashraf. He's picked a leaf out of Parvez Rasool's book and he smashed it past extra cover all along the ground. That is brilliant from the youngster. Look at that. That one was whistling away to the boundary. Nasir by talking about these youngsters, Parvez Rasool is watching from the other end. He might be a happy man. That is one heck of a shot once more, but there is protection in the deep. Talha Ashraf, Parvez Rasool has groomed him personally, and now Parvez Rasool watching him back like this might be a happy man. This is achievement for you. Parvez Rasool is on strike now. 62 for the loss of 2 wickets in the 8th over. Here is Imtiaz to Parvez. Parvez goes back onto the back foot and then punches it back along the track for the bowler to field in his own follow-through. So far, everything has come out of the middle of the bat of Parvez Rasool. This is confidence for you. And this is the grace and the poise with which Parvez Rasool bats. You won't see an ugly shot from Parvez Rasool. A lot of noise being made by the spectators there on the boundary. Probably they are just chanting Parvez Rasool's name. Here is Imtiaz to Parvez. Parvez flicks it, finds Oaz Baba at short mid-wicket. No run, 2 dot balls. Parvez Rasool is calm as a cucumber, cool as a cucumber as well. He just grasps this pressure moment and he comes up with his own. Here is Imtiaz once more for the 5th time in this over to Parvez. Wrapped him onto pads as he was trying to just flick it away towards mid-wicket. Shout for LBW. Umpire is unmoved. Hands on the heads from Imtiaz lefty. 63 for the loss of 2 wickets. That was off the bat because no signal from the umpire has given them as runs. 63 for the loss of 2. Final ball of the 8th over coming up. Talha Ashraf is on strike. Current run rate is 8.04. Deep mid-wicket, long on. Third man is inside the circle. There is a backward point. So far, no answers from the bowlers of Bijbehara from the bowlers of Sultan Warriors Baramulla against Bijbehara Sports Club batsman. Once again, he goes up and over, but there is protection in the deep.
This time Talha Ashraf will pick up a single to finish the over. 8 overs done, 64 for 2 in pursuit of 174 from their allotted 20 overs. Parvez Rasool and Talha Ashraf out there in the middle. I would definitely like to have a look at that shout for LBW. That was definitely hitting the pad. But I think probably that came off the inside edge because the batsman was trying to work this one. Had there been no inside edge, Parvez Rasool was plumb in front. But probably umpire negating that appeal because of that inside edge. Change in bowling, spin for the second time in this match, for the third time in this innings, beg your pardon. It's going to be Nadeem Dar time here at Bijbehara Sports Field. Nadeem Dar is going to bowl. Right arm off spin. On strike is Talha Ashraf. Parvez Rasool is at the other end. He's batting on 9 of 5 and Talha has looked good. He's batting on 13 of 17. तेरह रन कुल मिलाकर अब तक तलहा के खाते में 17 गेंदों का सामना किया। परवेज रसूल ने 5 गेंदों का सामना किया। 64 रन टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवरों का खेल अब तक हुआ है और कुल मिलाकर जो रन चाहिए जीतने के लिए अभी भी 110 72 गेंदें बची हुई है। और नदीम डार उनका बॉलिंग विश्लेषण, हालांकि पहली गेंद करने के लिए तैयार है। इस बार पैड लाइन पे आती हुई गेंद ऑन साइड में गेंद को खेला, गेंद उस ओर गई है स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। वहां हल्का सा फंबल हुआ, वसीम कासरो कुछ इशारा कर रहे हैं वहां आजम रत्र की ओर, पर जो मौका मिला रन लेने का उसमें सफल रहे तलहा के खाते में ये 2 रन, टीम का स्कोर 66, 2 विकेटों के नुकसान पर 8.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। और अब जाकर नदीम डार गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हायर सेकेंडरी छोड़ से वो गेंदबाजी करने की तैयारी में और सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो बल्लेबाजी करने की तैयारी में रहेंगे और सामना करने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, सीधे आकर गेंद को तो खेला, वहाँ आसानी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने ये 1 रन चुरा लिया। लगातार जो तालमेल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इन दोनों बल्लेबाजों की ओर से। अगर हम तलहा और परवेज रसूल की बात करेंगे, फिलहाल इस ओवर में अगली मरतबा तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो परवेज रसूल वो स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे, वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में है। सामना करने के लिए तैयार नदीम डार चले इस ओवर में। अगली मरतबा पारी का इस समय 9वां ओवर जारी है। इस बार पलट कर खेला गया स्ट्रोक, गेंद जाएगी टिप्स के लेग के ऊपर से सीमा रेखा से पार 6 रनों के लिए। ये लगा एक और आतिशी स्ट्रोक वहां परवेज रसूल के बल्ले से। खूबसूरत बल्लेबाजी, अद्भुत बल्लेबाजी इस समय बीच मैदान पर परवेज रसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये है क्वालिटी यहाँ इस बल्लेबाज की जो इस समय दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं और ये जानते बखूबी जानते हैं कि टॉप विकेट पे किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और यही डिफरेंस, यही फर्क होती है हमेशा टॉप विकेट और मैच विकेट में। That was short and Parvez Rasool pounced on it. The likes and the quality of Parvez Rasool, he was going to dismiss that all day long. He deposited it over deep square leg for a 6. Nadeem Dar to Parvez Rasool. Once again rocks back onto the back foot and that is sumptuous. That is brilliant from Parvez Rasool. This time to the opposite direction, to the backward, to the point boundary this time, and he gets 4 more. 1 to the deep backward square leg boundary, 1 to the cover point boundary. He is picking up boundaries at will. 77 for the loss of 2 wickets. This time using the pace and guiding it straight to the fielder at short range. 77 for the loss of 2. Ah, lovely! That is gorgeous! That is 6 over extra cover! He's putting on an exhibition here, Parvez Rasool. If you missed some quality in the previous 3 days, there is quality for you. That was outstanding. Picture perfect. Extra cover lofted drive. And that has gone all the way for 6. And in no time, Parvez Rasool is batting on 25 of 9. It's 83 for 2 of 9.
और 25 के स्कोर पे है परवेज रसूल। केवल 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तलहा ने 16 बनाए 19 गेंदों पर, और जो भी स्ट्रोक लगा यहाँ परवेज रसूल के बल्ले से वो दर्शनीय और देखने लायक था। और बिजबेहारा के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्हें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि उन्होंने इस सपूत को यहाँ तराशा, निखारा, पैदा किया और जन्म लिया इस धरती पे परवेज रसूल जैसे खिलाड़ी ने। और पूरे JNK की शान है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। बिल्कुल श्रीलंका में जो लीग हुई थी जिसमें आदिल रशी भी थे और उसका वो हिस्सा थे, और बांग्लादेश से भी वो खेल कर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये कोई आसान काम नहीं है। इयान मॉर्गन की विकेट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हासिल की, इंग्लैंड को 2019 का जिसने विश्व कप दिलाया है। और 25 तारीख को शायद वो फिर से जा रहे हैं। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। परवेज रसूल 25, 9 गेंदों का सामना किया। तलहा ने 16, 19 गेंदों का सामना किया। 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। यह 10वां ओवर इस पारी का शुरू होने जा रहा है। नदीम डार का पहला ओवर काफी खर्चीला साबित हुआ। 19 रन आए इस ओवर में, एक्स्ट्रा रन तो आए नहीं, और बल्ला चमका यहाँ परवेज रसूल का। और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज, इस ओवर की पहली गेंद, इस बार गेंद को खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद आई है, और परवेज रसूल ने इरादा तो नहीं किया था रन लेने का, हालांकि तलहा काफी आगे निकल आए थे। हवा में हाथ बुलंद किया, इशारा किया आप वापस जा सकते हो, रन तो कम, जोखिम ज्यादा था इस स्ट्रोक में, और ऐसे में कोई रन तो मिला नहीं है। दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज हर्षिद। वो गेंदबाजी करने की तैयारी में बैकफुट पर चले गए। स्वीपर कवर का इलाका संभाला, खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। तब तक 22 गज का फैसला तय किया दोनों बल्लेबाजों ने। परवेज रसूल वो अभी भी नाबाद हैं 25 के स्कोर पे। 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक छक्का जड़ा। कुल मिलाकर 4 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले हैं। वो सामना करने की तैयारी में ओपन स्टांस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्रंट फुट पर आए, गेंद को धकेला लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक डीप लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आए फील्ड करने के लिए। 1 रन और मिलेगा बल्लेबाज को। 85 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 9.3 ओवर का खेल हुआ है। अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए बाएं हाथ के गेंदबाज हर्षिद तैयार हो रहे हैं। सामने है तलहा, बैक फुट पर गए, नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर वसीम काशरू के ग्लव्स में चली गई। डॉट गेंद के साथ 5वीं गेंद करने की तैयारी में है गेंदबाज हर्षिद। There has been some variable bounce right from the first over, as here is Harshid to bowl to Talha. Talha cuts well. There is protection in the deep. Will not go to the boundary. Will be a single to take the total to 86 for the loss of 2 wickets. The final ball of the 10th over coming up. Harshid is going to bowl to Parvez Rasool. Deep mid wicket, long on, deep backward square leg, sweeper cover. As Harshid to Parvez Rasool. Parvez Rasool this time swings it down towards deep backward square leg. The fielder picks the ball up, throws it in. The batsmen take a single to finish 10 overs, halfway stage. Bijbehara Sports Club cruising on 87 for the loss of 2 wickets. Parvez Rasool is batting on 27 of 11 and Talha is batting on 18 of 23. 87 further runs needed from 60 more balls. And this is going easy for the likes of Parvez Rasool and Talha, and we have a rehydration break in the middle.
Game about to resume after the rehydration break. 87 for the loss of 2 wickets. Required run rate is 8.70. Current run rate is also 8.70. The required number of runs are equal to the number of runs scored so far. Parvez Rasool and Talha putting up a partnership. So far, statement has been put and issued by Parvez Rasool in this innings. He's played some eye-catching drives, some quality cricket shots, and look, you can just have a glimpse of the dugouts as well. You can have a glimpse of the number of spectators present in the ground. It's going to be a change in bowling, probably. Azim Rathar is going to continue. Azim Rathar is going to bowl his second, and Nadeem Dar has been taken off after an initial expensive over. Azim to Parvez Rasool in the end, put down! Not only has that been put down, but that has gone into the crowd for 6. That went straight down the throat of the fielder at deep backward square leg. He puts it down, he parries it over, and 6 more to Parvez Rasool. That was not timed at all. Might have been a wicket for the bowler, but unfortunately for him, he was barred from picking up the wicket of Parvez Rasool. Next ball. That is gorgeous. That is picture perfect, but there is protection in the deep. Gets around. Jahangir Lone restricts that good quality stroke from Parvez Rasool to just a single. That single takes the total to 94 for 2 in the 11th over. As Azim Rathar, left arm to bowl to Talha. Talha this time not timing it properly, goes towards cow corner. Parvez Rasool is not interested whatsoever in the second. Will be only a single. That single takes the total to 95 for the loss of 2. Now they need 79 from 57. Let's have a look at the field. Wicketkeeper is up to the stumps. There is a short third man. There is a short fine leg. And a man at backward point in the air. But straight down the throat of Jahangir Lone. One bounce. Jahangir Lone picks that one up. It's timed beautifully once more from Parvez Rasool. Talha is on strike. Azim Rathar. This time Talha goes up, aerial, and he will be caught by Jahangir Lone. That's a foul shot, and the youngster falls prey to Azim Rathar. It's 96 for 3. 96 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 10.4 ओवरों का खेल अब तक हुआ है. हालांकि 10.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है और 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. यहाँ एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है. मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं. परवेज रसूल अभी भी 35 के स्कोर पे नाबाद 14 गेंदों का सामना किया. 96 रन. टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 10.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है और ये जो ओवर गया इसमें 9 रन आए हैं अब तक और 78 चाहिए जीतने के लिए. 55 गेंदें बची हुई है. आज़िम रथर 18 के स्कोर पे 18 रन अब तक उन्होंने हालांकि खर्च किए. एक सफलता अर्जित की. मयंक रावत वो अब डगआउट से नमूदार हुए हैं. एक बड़ा नाम मयंक रावत वो इस टीम लाइनअप में हैं और बैटिंग क्रम को मजबूती तो ज़रूर मिली है. और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो इरशाद भाई, जो टीम के एक और प्रमुख हथियार है आकिब मीर का अब तक इस्तेमाल नहीं करना पड़ा टीम को. जिस तरह बैटिंग लाइनअप में काफ़ी गहराई है और परवेज़ रसूल जो इस टीम के कप्तान हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि किस बल्लेबाज का कब इस्तेमाल करना है, मैच की परिस्थितियाँ क्या हैं और उस हिसाब से वो यहाँ बल्लेबाजों को भेज रहे हैं. और परवेज़ रसूल का स्कोर 35, 14 गेंदों का सामना किया. मयंक रावत 0 और अब तक उन्होंने किसी गेंद का सामना नहीं किया, खाता नहीं खोला. 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर.
इस ओवर की गेंद इस बार बैकफुट पर चले गए, गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगी है, शॉट थर्ड मैन की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। इस तरह से ये ओवर समाप्त हुआ, 11 ओवरों का खेल समाप्त, 96 रन, 9 रन आए हैं इस ओवर में, 174 का लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। करंट रन औसत 8.73 की और 8.67 की औसत से अब रन बनाने होंगे, 78 चाहिए जीतने के लिए। 9 ओवरों का खेल बचा हुआ है और हर गेंद के साथ मैच रोमांच भरा हो रहा है। माइक रावत शून्य, एक गेंद का सामना उन्होंने किया, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, जबकि परवेज रसूल वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, दाएं हाथ के गेंदबाज हर्षित का वो सामना करेंगे। हर्षित ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। बिजबेहारा प्रीमियर लीग के इस बड़े मुकाबले में 2-2 हाथ कर रही हैं बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब। उनका मुकाबला हो रहा है सुल्तान वॉरियर्स के साथ। सुल्तान वॉरियर्स के खिलाफ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान परवेज रसूल ने टॉस जीता, ये फैसला लिया कि पहले वो फील्ड करेंगे। तरोताज़ा विकेट और बेहतर परिस्थितियाँ और उन्हें लाभ मिला, शुरुआत में ही कुछ झटके दिए सुल्तान वॉरियर्स को, बैकफुट पर टीम नजर आई और आखिरकार मसीहा बन के आए जहांगीर लोन, उन्होंने पारी को संभाला, एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने में टीम सफल रही है। बाएं हाथ की गेंदबाज हर्षद चले, परवेज रसूल को गेंद को ड्राइव किया, क्या दिलकश स्ट्रोक, बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है, मानो कि 4 की छाप लगी थी, इस पे मोहर लगी थी और वहां लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थे, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे और वहां लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तालियां कर रहे थे बल्लेबाज के लिए कि किस तरह का ये स्ट्रोक था, गजब का स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। परवेज रसूल सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, पहले फ्रंट फुट पर, फिर सारा वजन बैक फुट पर लेकर चले गए, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ खेला गया स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी आए मिड विकेट से लेफ्टी, जबकि लॉन्ग ऑन से आए हैं ओवेस बाबा फील्ड करने के लिए, 1 रन लेने से नहीं रोक सके परवेज रसूल को। परवेज रसूल का स्कोर 40, 16 गेंदों का सामना किया, माइक रावत 0, 1 गेंद का सामना किया, 101 टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। ये रही इस ओवर की तीसरी गेंद। Next ball to Mike Rawat, just knocks it away into the gap, picks up a single. And let me share an interesting stat about Mike Rawat. He belongs to Delhi, and in a 40 over game last year, March 3rd, he smashed 408 not out of 139 balls with the help of 32 sixes. That one has been knocked away down the ground for one more run by Parvez Rasool, taking the total past 100 to 102, 103 for the loss of 3 wickets. Mike Rawat is on strike now. Harshit to bowl to Mike. Up to the stumps. Bowls to Mike. Mike strokes it straight to the fielder. Pradeep Prahasar is fielding inside the ring at extra cover. No run. He's bowling round the stumps to the right hander. He's got a deep mid wicket, long on, deep backward square leg on the boundary. Short fine leg is inside the circle. Next ball, he strokes it once more elegantly down towards wideish long off. Jahangir Lone does the fielding. The batsman cross over for a single easily. That single takes the total to 104 for 3. 6 bowlers have been used so far to bowl those 12 overs, and none of the bowlers apart from Pradeep Prahasar, and with him Pradeep Prahasar and Imtiaz Lefty. They were the 2 bowlers who were able to pick up wickets. Other bowlers have gone wicketless. 12 overs done. It's 104 for 3. They now need 70 from the remaining 48 balls. Can they pick up a couple of wickets? Particularly the wicket of Parvez Rasool will set the tone for Sultan Warriors Baramullah. Mike Rawat is new to the crease. 104 for the loss of 3 wickets. Easy going at the moment and smooth sailing at the moment for Bijbehara Sports Club. Azim Rathar to Mike. Mike knocks it in the gap to mid-wicket. Mid-wicket fielder comes from the boundary, restricts the scoring to just 1. Parvez Rasool is now on strike. Parvez is batting on 41 of 17. It has been one belligerent innings so far. Rocks back onto the back foot, misses the line of the ball completely. He was trying to go backward of square on the offside, not making any contact. That was too close to be cut. There is a backward point
There is a short third man. If that one gets an outside edge, that will be gobbled by the fielders. Once again, cutting it up the back foot, finding the field. No run. It's another dot ball. Azim Rathar from the school end up to the stumps to Parvez. Parvez Rasool goes onto the back foot and punches it down towards deep extra cover. Long off, gets around, picks the ball up. In the meantime, the batsmen cross over for one more. There's a change of bat for Mayank Rawat, and the total is 106 for the loss of 3 wickets. Parvez Ghulam Rasool Zargar is born 13 Feb 1989. Indian cricketer. Has represented India, has represented state, has represented a couple of franchises, and he has played cricket in Bangladesh and Sri Lanka as well. That is helicopter. That is brilliant. That's gone for 4. You cannot stop this onslaught from Parvez Rasool. He's batting on a different planet. This time it is Mayank Rawat taking a leaf out of Parvez Rasool's book and smashing it downtown. One bounce into the boundary. Mayank Rawat has got a big boy power as well. This time he knocks it down the ground. Easy pickings for the fielder. Collects the ball, throws it in. The batsmen pick up a single. Single to finish the 13th. It's 110 for the loss. 111 for the loss of 3 wickets. Parvez is batting on 42. Talha is batting. Beg your pardon. The other batsman is Mayank Rawat, who is batting on 8 of 7. Azim Rathar, 3 overs, 1 wicket for 25. 63 needed from 42. Should not be that difficult because Mayank Rawat and Parvez Rasool are batting sensibly and with some sort of authority. क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, पर यहाँ अगर परवेज रसूल और साथ में माइक या आकिब मीर की विकेट गई तो वापसी करने के मौके बन सकते हैं यहाँ सुल्तान वॉरियर्स के लिए। पर क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है। यहाँ मजबूत स्थिति में नजर आ रही है टीम बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब। 111 3 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 7 ओवर अभी भी बचे हुए हैं और जीतने के लिए 63 रन चाहिए। गेंदबाज हर्षद गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज माइक के लिए और ऑन साइड में ये लिया गया स्ट्रोक, गेंद फाइनल लेग की ओर गई है। कलयों को मोड़कर ये स्ट्रोक उन्होंने ली और इस तरह उन्होंने जो हेड पोजीशन देखने लायक थी कि गेंद हवा में ना जाए, और इस शैली का स्ट्रोक केवल एक ऐसा बल्लेबाज ले सकता है जो ऊपरी सत्र का हो। और क्या बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। परवेज रसूल सामना करने की तैयारी में, गेंद को खेला, गेंद उस ओर गई है हवाई रास्ते, स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। क्या शानदार स्ट्रोक था परवेज रसूल का, और इस छक्के के साथ उनका जो निजी स्कोर अब 48 हुआ है। 2 रन चाहिए यहां अर्धशतक लगाने के लिए और 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 48 रन बनाए। और कहते हैं परवेज रसूल लॉन्गर फॉर्मेट के खिलाड़ी है, पर यहाँ जो स्ट्राइक रेट है वो 200 से अधिक है। और सुल्तान वॉरियर्स का जो बॉलिंग क्रम है तहस नहस हुआ यहाँ परवेज रसूल के सामने। परवेज रसूल 48 21 गेंदों का सामना किया, अब वो सामना करने की तैयारी में। 118 3 विकेटों के नुकसान पर जो आस्किंग रेट हैं वो लगातार घटती जा रही हैं। 8.40 की औसत से अब रन चाहिए, 56 चाहिए जीतने के लिए। 40 गेंदें बची हुई है। हर्षद उन्होंने अब तक 19 रन खर्च किए 2.2 ओवर की गेंदबाजी में, और इस ओवर में अब तक 7 रन आए हैं। माइक का स्कोर 9 8 गेंदों का सामना किया। परवेज रसूल ने 48 21 गेंदों का सामना किया। लंच के बाद बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब का मुकाबला फिर से होगा और उनका मुकाबला होगा मंतकी क्रिकेट क्लब के साथ, और मंतकी क्रिकेट क्लब का शायद वो पहला मुकाबला होगा, जबकि बिजबेहारा का दूसरा। और 118 3 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंद जिस दिशा में गई है वहां से गेंद को लाने में थोड़ा समय तो जरूर जाएगा। अब ऐसा लग रहा है एक विराम, एक फिर से खेल शुरू होने जा रहा है। परवेज रसूल बातचीत कर रहे हैं वहाँ वसीम काशरो परवेज रसूल के साथ, और परवेज रसूल उन्होंने गेंद को चेक किया। अब फिर से खेल शुरू होने जा रहा है। 118 3 विकेटों के नुकसान पर 13.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है माइक रावत, उनका स्कोर 9 8 गेंदों का सामना किया। एक साझेदारी पनप रही है और हो सकता है ये साझेदारी ही काफ़ी हो
टीम बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को जीत दिलाने के लिए। बिजबेहारा प्रीमियर लीग का बड़ा मुकाबला आ रहा है आपकी ओर, आप लाइव कवरेज का आनंद ले रहे हो बिजबेहारा प्रीमियर लीग के इस ऑफिशियल पेज पर। 118 for 3 in the 14th over. Parvez Rasool and Mayank Rawat have stitched a partnership of 22 or 15. And at this stage, Sultan Warriors Baramulla were struggling on 80 for the loss of 6 wickets. Harshad to bowl to Parvez Rasool. Bowls to Parvez. Parvez goes deep into his crease, pulls this one in front of square, down towards deep mid-wicket. The batsman will pick up a single. That's 49th run for Parvez Rasool. And now it will be down to Mayank Rawat to handle the business at the other end. That previous shot hit by Parvez Rasool was just out of screws, out of the middle and over deep square leg. Next ball, that's cut away in the air. That's going to be a crowd catch. It's always coming off the ground, and the fielder at cover, Pradeep Rasar, catching that. But that wasn't a catch by any stretch of imagination. Next delivery to Parvez, to Mayank Rawat. Mayank Rawat knocks it down the ground. Mid-on gets around, picks the ball up. In the meantime, the batsman cross over for a single. 120 for 3. With one more ball to come in the 14th over. Parvez Rasool is on strike. 49 not out. Here is Harshad to Parvez. Parvez goes deep into the crease. He's trying to cut. It's outside the off stump. It's a dot to finish. 14 overs done. It's 120 for 3. Chasing 173. Parvez Rasool has done absolute wonders for this team of Bijbehara Sports Club. He has been instrumental in so many good chases. A couple of days earlier in Seer Hamdan Premier League, smashed 2 back-to-back half centuries and picked up 5 wickets in 2 matches that he played in a single day in that league at Seer Hamdan Cricket Stadium. And nowadays, Parvez Rasool working on his fitness. He's always a fitness freak and working on his game, no matter how, no matter what, and no matter where he is. Parvez Rasool has worked hard for the upliftment of cricket, and he is an important member of Bijbehara Cricket Association. And Bijbehara Cricket Association, let's all hail Bijbehara Cricket Association for providing quality cricket for the Valley players who are representing their franchises in this tournament. Here is Pradeep Rasar once more. The third over between the umpire and the stumps to Mayank Rawat. Mayank Rawat waits for the ball and nudges it behind square on the onside. It's now down to Parvez Rasool, who's batting on 49. That single takes the total to 121 for the loss of 3 wickets in the 15th over. Smooth sailing now for Bijbehara Sports Club. They have lost only 3 wickets and 53 needed from 35. Parvez Rasool waiting for Pradeep Rasar. He's bowled well. Parvez knocks it in the gap. That is the 50th run. That's well played, Parvez Rasool. Another scintillating innings, a gorgeous innings for Parvez Rasool. He raises his bat, gets the acknowledgement from the crowd. He's a local boy and he is putting on a show once again. Well played. Take a bow, Parvez Rasool. 122 for 3. We are in over number 15. 15वां ओवर इस प्रगति पे शानदार अर्धशतक, और यहाँ जो मौजूद दर्शकों की एक बड़ी तादाद है उन्होंने स्वागत किया इस अर्धशतक का। और परवेज रसूल छाए रहे इस मुकाबले में। अगर मैं खासकर बल्लेबाजी की जिक्र करूं, 24 गेंदें, 50 रन, 200 से अधिक का स्ट्राइक रेट, और वो सामना करने की तैयारी में है वहाँ मायक रावत। 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 11 गेंदों पर अब तक 11 बनाए हैं। 122, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की तीसरी गेंद राउंड द स्टंप्स, अंदर की ओर आती हुई गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को, सीधे गई कवर की ओर, दायरे के अंदर गेंद फील्ड हुई। वहाँ तैनात नदीम डार के हाथों कोई रन नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ है। और 50 रन 24 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 4 छक्के जड़े यहाँ परवेज रसूल ने। फिर से गेंद को निकाला कवर की ओर और दौड़ पड़े थे रन के लिए परवेज रसूल। ये देखते हुए झपट पड़े नदीम डार, इरादा बदला और बढ़ते हुए कदमों को वापस खींचा क्रीज के अंदर। 174 चाहिए बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को, ये लक्ष्य
छूना होगा जीत हासिल करके। वो तो ज़रूर चाहेंगे यहाँ अपने सफ़र का वो आगाज़ जीत के साथ करे। लंच के बाद दूसरा मुकाबला होगा उनका और माइक को 1 रन मिला है और माइक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 12 उनका निजी स्कोर, 14 गेंदों का सामना किया। परवेज़ रसूल की मैं जिक्र कर रहा था, 208.33 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं उन्होंने, 4 छक्के 4 चौके, 24 गेंदों का सामना किया। वो अब सामना करने की तैयारी में, सामना करेंगे गेंदबाज प्रदीप का। प्रदीप बाएं हाथ के गेंदबाज, वो स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे, राउंड द स्टंप से गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के परवेज़ रसूल के लिए। परवेज़ रसूल और जो बैटिंग स्टांस हैं वो दिलकश हैं, देखने लायक हैं। इस बार गेंद कुछ नीचे रही और अंत तक देखते रहे, गेंद को धीरे से दिशा दी, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। कौन कहता है T20 क्रिकेट ताकत से खेली जाती है? यहाँ नजाकत भरा स्ट्रोक, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। ये देखते हुए सिर्फ कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात थे पर वो देखते रहे और आउटफील्ड का भी कुछ लाभ मिला। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन। चौके के साथ 127, टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 47 चाहिए 30 गेंदों पर अब जीतने के लिए। They say as a batter you must have that perfect balance, perfect technique, and that time Parvez Rasool has all the time in the world, using the pace of the bowler on that occasion, getting deep into his crease and waiting for the ball. And this is Parvez Rasool for you. He is batting on 54 of 25, and when he came out to bat, until this time we never knew that he's hitting boundaries and sixes, and suddenly he's batting on 54 of 25. It reminds me of Michael Bevan, it reminds me of Darren Lehman, who used to come and knock the opposition out by using those paces, by using the pace of the bowlers and picking up runs in the form of 1s and 2s. Who says that T20 is not a format of those 1s, 2s and boundaries? Parvez Rasool has shown this. He has played a masterclass today. It's an absolute masterclass. No blemish whatsoever. No foul shot, no flaw. It's a flawless innings from the master, Parvez Rasool. 127 for 3 of 15. 47 needed from 30. Mayank Rawat is batting on 12 of 14. It's going to be a bowling change. Here is OS Baba once again for another burst. In his opening burst, he was fairly expensive, giving away runs because Shiva Singh was taking a heavy liking of him in the first over. OS Baba, 1 over for 18 runs. He's going to bowl from the school end now. Previously he bowled, beg your pardon, he's going to bowl from the market end. Previously he bowled from the school end, in which he was taken away for 18 runs by the likes of Shiva Singh. On strike is Mayank Rawat. Mayank Rawat is one of those batsmen who bats for Delhi, and he bats in the middle order. But on that day, when he hit 408 of 139 balls, he batted as an opener. Slices it up and over, one bounce into the deep backward point boundary, and that's gone all the way. Beg your pardon, that has gone all the way for 6. Amazing shot over backward point, slicing it, and he gets a good amount of bat onto that. Let's have a look at it once more. That was short and that was hammered. That has gone a fair distance, Nasir bhai. It looked like one bounce boundary. That's gone all the way into the crowd for 6. OS Baba to Mayank Rawat. Mayank Rawat uses the pace, knocks it away onto the offside. Cannot be any runs. Pradeep Prahasar is fielding at backward point. Short third man is up inside the ring. Short fine leg is inside the ring. There is a square leg on the boundary. There is a mid wicket on the boundary. Long on, long off. And there is a man sweeping on the offside at the point boundary. Parvez Rasool is at the other end. Mayank Rawat is batting on 18 of 16. When Parvez Rasool bats, the other players are absolute mute spectators at the other end. Here is the next delivery. That is driven. That's gone up in the air. That's gone into the crowd. For a moment or so, I thought that the ball might be going and dropping in front of the mid-wicket fielder, but that has gone well over him, and that's gone into the crowd for 6 at mid-wicket. That's a brilliant shot. Mayank Rawat is putting salt on the wounds of OS Baba. 30 runs of 1.3 overs. OS Baba is going the journey today. 139. The crowd are on their feet. OS Baba
to Mike Rawat, up to the stumps, balls to Mike, and that is the best of them all. That's over extra cover. That is a mighty hit for 6. यहाँ क्राउड में है माइक की ही बल्ले बल्ले। 3 छक्के लगे हैं इस ओवर में और 4 गेंदें अब तक हुई हैं इस ओवर की। 36 रन अब तक खर्च किए हैं ओवैस बाबा ने और 1.4 ओवर का खेल अब तक उनके द्वारा देखने को मिला है। 36 खर्च किए हैं। टीम का स्कोर 145, कुल मिलाकर 3 झटके लगे हैं। माइक सामना करेंगे ओवैस बाबा का। बाबा 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप्स दाएं हाथ के गेंदबाज सामना करने के लिए माइक तैयार हो रहे हैं। लॉफ्टेड बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद उसूर गई है जरूर, पर वहां खिलाड़ी तैनात। एक शानदार कैच वहां तैनात खिलाड़ी के द्वारा। माइक मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। जहांगीर लोन ने एक शानदार कैच लिया और एक अच्छी पारी समाप्त हुई है। हालांकि ये विकेट भी टीम को वापसी कराने के लिए काफी तो नहीं होगी, केवल ये चौथा झटका लगा। अब 145 टीम का स्कोर, 29 चाहिए अब जीतने के लिए। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जहांगीर लोन के एक शानदार कैच के कारण पारी समाप्त हुई। माइक की डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज, ऐसा तो लग रहा है कि आकिब मीर डगआउट से नमूदार हुए। जो दबदबा रहा यहाँ बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब का, वो देखते ही बनता जा रहा है। यहाँ जो हौसला बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं समर्थक बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के, और एक बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ इस मैदान में। अब आकिब मीर और परवेज रसूल बीच मैदान पर नजर आ रहे हैं। ग्राउंड के डायमेंशन वो काफी ज्यादा बड़े हैं और ऐसे में गेंद को बाउंड्री पर अगर आपको पहुंचाना होगा तो ताकत के साथ साथ टाइमिंग भी गजब की होनी चाहिए, और वही यहाँ दर्शाया हर किसी बल्लेबाज ने। चाहे आप परवेज रसूल की जिक्र करोगे, आप तलहा की जिक्र करोगे या माइक की बात करोगे, हर किसी का बल्ला चमका शिवा सिंह को मिलाकर। तो उनके जो बल्ले हैं, उनके बल्लों से जो स्ट्रोक देखने को मिले, टाइमिंग के साथ ताकत भी खूब थी स्ट्रोक के पीछे। और ये पहला मिस स्ट्रोक तो नहीं कहेंगे, हम मिस टाइम तो नहीं कर बैठे थे, पर वहाँ तैनात जो खिलाड़ी थे, आन बान और शान सुल्तान वॉरियर्स की, उन्होंने एक शानदार कैच लिया। उस कारण एक अच्छी पारी समाप्त हुई है। परवेज रसूल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, नए आए बल्लेबाज आकिब मीर वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। There was nothing wrong with that shot, but that was outstanding skill in the field by Jahangir Lone. 145 for 4. Akib Mir has replaced a dangerous looking Mike Rawat. 29 needed from 25. He's on strike. Finally, Owas Baba has some respite. He's picked up a wicket. He's gone for 36. And final ball of his second over is going to bowl to Akib Mir. Wicketkeeper standing well back. There is a short fine leg. There is a short third man in place. Backward a point inside the ring. There is a catching extra cover. There is a long on, and long off has come at a region of mid off. Owas Baba. The crowd is on their feet. Here is Owas Baba, right arm round, right arm over, this time stroked back along the track. And Owas Baba feels in his own follow through. Dot to finish the over. The total is 145 for 4, 16 overs done. Bijbehara Sports are cruising at the moment in pursuit of 173. Current run rate is 9.06. 29 needed from 24 with Parvez Rasool there, and we have a message. We have a message, an important message, and a simple one. Say no to drugs, because drugs are sweet poisons. They kill. Why to choose drugs over life? Life is beautiful. Cricket is beautiful. You can watch these number of people here. They're watching a masterclass being put by Parvez Rasool, and Parvez Rasool has a message for you. Stay away from drugs. Say yes to life. Enjoy life. Enjoy cricket. Chants being sung there by the crowd, who are on at their absolute best. They are a knowledgeable crowd. This has been a show put by the batters, the bowlers, and the fielders of Bijbehara Sports Club in this match. Taking away the lone innings of lone Jahangir in the first innings. Apart from that, it has been all the way Bijbehara Sports Club in this match. Pradeep Prahasar, he has bowled outstandingly well. 3.1 overs, 16 for 1. On strike is Parvez Rasool. Beg your pardon, Parvez Rasool is at the other end. On strike is Akib Mir, between the umpire and the stumps. Bowls to Akib. Akib comes forward, taps it in front of the fielder. They rush through for a single.
That is outstanding running between the wickets. Parvez Rasool might be batting on 55 of 26, but he is absolutely fit. No blemishes shown by Parvez Rasool so far whatsoever. He has batted and he has bowled, he has fielded, and he is looking afresh in the centre. 147 for 4, 27 needed from 22. This is the 17th over. Crowd on their feet. Here is Pradeep Rahasar to bowl to Parvez Rasool. Bowls to Parvez. Parvez drives elegantly back down the ground. Jahangir Lone does the fielding. The batsman crossover for a single. The total with the help of that single moves up to 148 for 4. 16.3 overs have been bowled. On strike now is Aqib Mir. राकिब मीर वो सामना करने के लिए तैयार. इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद उस ओर गई है लॉन्ग ऑफ की तरफ. जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा. 1 रन खाते में. इस 1 रन की सहायता से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अब लोन हालांकि आकिब मीर पहुंच गए हैं, जबकि सामना करने की तैयारी में है परवेज रसूल. परवेज रसूल दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे गेंदबाज प्रदीप का. प्रदीप की गेंद परवेज को, और परवेज ने एक बड़ा स्ट्रोक लिया. गेंद मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से गई हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए. इरशाद भाई, हर कोई तो यही कहता होगा क्यों जेएंड के क्रिकेट टीम में दबदबा है. परवेज रसूल का क्यों दबदबा था इतने समय तक? अगर अब तक आपको उसका जवाब नहीं मिला तो आप ये पारी देख सकते हो. अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने सबके दिल जीत लिए थे, और यही कारण है, हम यूं ही नहीं कह सकते हैं इसको, ये कोहिनूर था जेएंडके का. There is no second thought to that. He is an absolute master. Parvez Rasool, 62 of 28, and the answers to the critics are there. Parvez Rasool. This time he just flicks it beautifully in front of the mid-wicket fielder. He was interested in the second run, but Aqib Mir sends him back. 17 overs done. The total is 156 for 4. And Parvez Rasool is putting on a show here. He's batting on 63 for 29. And he picked up 3 wickets in the first innings as well. So he is a strong contender for the man of the match. Once again, it has been a Parvez Rasool masterclass. An absolute flawless innings, and Bijbehara Sports Club are in sights of a clinical performance and a victory. Well-deserved victory. It's season number 3 of Bijbehara Premier League in the iconic cricket ground of Bijbehara Sports Field. This is the higher secondary cricket ground. We have a higher secondary school adjacent to this, and the higher secondary cricket ground has done absolute wonders in promoting and uplifting cricket. You can see a number of youngsters. Talha Ashraf was one. I have just witnessed a number of tweakers here, be it left arm spinners, be it right arm leg spinners, be it the finger spinners or the wrist spinners. I have seen them excel in presence of under the ages of the great Parvez Rasool. It's going to be Harshad to bowl. On strike is Parvez Rasool. From the market end, you can hear to those chants, bye bye Parvez bye. It's going on across the crowd, across the ground as well. Harshad to Parvez. Parvez was trying to flick. It's down the leg side, has to reload and re-bowl that. That's a wide. 157 for 4. This is the 18th over. 17 from 18. Harshad to Parvez Rasool. Goes deep into his crease, crashes it off the back foot. There is protection in the deep. Fielder does well. This is the exact fielder who put that catch down of Parvez Rasool, and that ball went straight down the throat. And with the help of that single, the total has gone up to 158. Aqib Mir strokes it down the ground elegantly. Zuhur Zolo fails. It's back with Parvez Rasool now. And the crowd starts chanting once again. Harshad, 24 for none. This is the 4th over of Harshad. Next ball, cuts away nicely. Fielder from deep cover moves across to his left, picks the ball up. In the meantime, the batsmen have crossed over for one more. That single takes Parvez Rasool to 65 of 31. Aqib Mir is batting on 3, less than a run a ball, but that's not, the heroics are not required. Parvez Rasool is doing it on the other end.
It's a dot ball. Past the bat as he was trying to go for an expensive extra cover drive. It has been one clinical show put first by the bowlers and then the batters of Bijbehara Sports Club. Harshad for the 5th time in this over to Aqib Mir. Bowls to Aqib Mir. Aqib Mir goes back onto the back foot and punches it down towards deep cover. The fielder is stationed there. The batsman will pick up one more run. Runs coming in the in singles. That's the need of the hour. That's what these batters are doing. Parvez Rasool is on strike. Goes back into the crease. Works it away. Down towards deep mid-on. One more run to finish the 18th. 18 overs done. It's 162 for 4. They now need 11 runs from 12 deliveries. It's as easy as it gets. Bijbehara Sports Club are in driver's seat at the moment. और अब जाकर आकिब मीर और परवेज रसूल की जोड़ी इस समय बीच मैदान पर काफ़ी खूबसूरत और सुंदर बल्लेबाजी आज की है परवेज रसूल ने और अभी भी वो 32 गेंदें 66 रन बनाकर अभी भी नाबाद और आकिब मीर ने 6 गेंदों का सामना किया 4 रन बनाकर नाबाद कुल मिलाकर अब तक 162 रन टीम का स्कोर पहुंच चुका है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 18 ओवरों की समाप्ति के साथ अब यहाँ से जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदें और 12 रन अब किस गेंदबाज को तलब किया गया पारी का 19 ओवर करने के लिए मुकाबला अभी भी रोमांचक और दिल को छूने वाला है क्योंकि 12 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 12 रन अगर यहाँ से एक अच्छी खासी गेंदबाजी हुई गेंदबाज की ओर से कहीं ना कहीं मुकाबले में अंतिम ओवर में भी एक रोमांच देखने को मिलेगा फिलहाल नए आए गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे नदीम डार को तलब किया गया उन्होंने 19 रन अपने ओवर में खर्च किए थे एक ओवर उन्होंने अपने कोटे का किया दूसरा ओवर करने के लिए तैयार हो रहे सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज परवेज रसूल इस बार गेंद को खेला और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा से पार छेड़ने के लिए स्लॉट में गेंद थी और सामने वाले प्लॉट में पार किया लाजवाब बल्लेबाजी इस बार परवेज रसूल के बल्ले से अब मात्र चाहिए 6 रन इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए 11 गेंदें अभी भी विशेष है That was out of screws from Parvez Rasool. Picking it up early, no respite for Nadeem Dar, and it goes over cow corner for a biggie. Here is Nadeem Dar to Parvez Rasool. Parvez Rasool flicks it elegantly. He's got that poise, he's got that grace. A single, and he hands the strike over to Aqib Mir. 169 for 4. They are just a stroke away from the win. Next ball, he goes inside out. Down towards long off, the fielder allows it to go through and Bijbehara Sports Club have levelled the score. 173 for the loss of 4 wickets and now just a solitary run to win. Here is Nadeem Dar to bowl to Aqib Mir. Misses the run up probably, the chance going on. Lot of pressure, lot of excitement. Here is Nadeem Dar to Aqib Mir. Aqib Mir finishes it in style, smashes it over wideish long off. That's gone all the way, and that is the victory for Bijbehara Sports Club. Well played Aqib Mir, well played Parvez Rasool, well played Bijbehara Sports Club. Congratulations and commiserations to Sultan Warriors Baramulla. Nasir bhai, let's talk about that chase. 174. It was not going to be an easy chase, but the way Bijbehara Sports Club openers went out with a positive intent, Shiva Singh, Aqib, Ahmed Bande, and then Talha Ashraf, and Parvez Rasool all the way. And Aqib Mir putting the final touch. This has been an absolute masterclass from the batters of Bijbehara Sports Club, particularly the great Parvez Rasool. 174 का जो लक्ष्य मिला था चेस करने के लिए इसको डिफेंड करने की जो कोशिश की थी यहाँ सुल्तान ने उसके लिए शुरुआत अच्छी चाहिए थी शुरुआत में विकेट नहीं मिले सुल्तान वॉरियर्स को वहाँ से एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ और कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं पूरे पारी की जिक्र करूँ जहाँ हम ये कह सकते हैं कि सुल्तान ने वापसी की है सुल्तान का पलटा पारी नज़र आ रहा है ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला इस पूरी पारी में छाए रहे परवेज रसूल और उन्होंने करके दिखाया आज
जिसके मन में अगर किसी के मन में कोई आशंका थी तो उसको भी आज जवाब मिला। और परवेज़ रसूल को क्यों कहते हैं हम, कोहिनूर हैं JNK का, और इस तरह की उन्होंने पारी खेली है। अभी काम तमाम नहीं हुआ, दोनों टीमों के लिए मौके तो कहीं और आएंगे। फाइनल में पहुंचने की जो दौड़ है, जो जंग है, वो समाप्त नहीं हुई है। और सुल्तान के लिए यहाँ ये एक मौका मिला है जांच पड़ताल करने का कि कहाँ उनसे चूक हुई। और टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय है जिस तरह आज परफॉर्मेंस रही, खासकर उन खिलाड़ियों का जो मैटिंग क्रिकेट पे छाए रहते हैं। और बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब के लिए सब कुछ तो सही साबित हुआ। और ये स्ट्रोक प्ले परवेज़ रसूल का आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी, और परवेज़ रसूल के जो ये स्ट्रोक थे। और यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब ने 6 विकेटों से हराया और बिजबेहारा स्पोर्ट्स क्लब को एक बड़ी जीत मिली है। ये स्ट्रोक आप देख सकते हो, जब कभी गेंद ड्रिफ्ट हो रही थी तो अंत तक वो इंतज़ार कर रहे थे गेंद का। इस स्ट्रोक को देख लीजिएगा इरशाद भाई, स्क्वायर लेग की तरफ जब कभी उन्हें लगा कि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे हैं तो सिंगल डबल से काम चलाया, और जब कभी मौका मिला तो बड़े स्ट्रोक खेले हैं, खासकर मिड विकेट के इलाके से, और उस दिशा से भी काफ़ी रन बटोरे हैं वहाँ परवेज़ रसूल ने। और न सिर्फ स्पिनर्स बल्कि तेज़ गेंदबाजों के खिलाफ भी जब उन्हें मौके मिले स्ट्रोक खेलने के लिए, और उन्होंने हमेशा हाथ जो खोले हैं तो वो सफल हुए हैं। और ये एक दिलकश स्ट्रोक था माइंक का, और शॉट ऑफ द डे अगर इसे कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। Absolutely, there were some tremendous shots. There were some brilliant skills shown by the batters of Bijbehara Sports Club, particularly Mayank Rawat and Parvez Rasool putting on a show. So the match summary: 173 for the loss of 9 wickets were put by Sultan Warriors Baramulla on the back of a brilliant half century by Lone Jahangir in the first innings, and Parvez Rasool taking 3 for 27 along with Asghar, who also took 3 for 27. In reply, Bijbehara Sports Club they scored 179 for the loss of 4 wickets in the 19th over, particularly through an innings, a masterclass innings by Parvez Rasool, who's remained not out on 69 of just 31 deliveries, and it was Bijbehara Sports Club who emerged as the victors by 6 wickets, thus starting their campaign on a winning note. We were live on the official Facebook page of, we are still live on the official Facebook page of Bijbehara Premier League and the YouTube channel of Bijbehara Premier League, particularly through State Sports Live and RJ Bashir's Heroics. And with me were Nasir Bhai and Amir Bhai in the commentators box. After the match, we will head to the post-match presentation party down under. Stay tuned.